Hello guys, what's up? Hi Prithvik, hi Chinmay, hi Venom, hi Parth. What's up guys? मेजर देख रहे हो कि नहीं दोस्तों? मस्त चल रहा है आज मेजर. क्या मजेदार गेम्स थे वो लोग का भी. क्या मस्त था गेम. बेस्कोस वर्सेस दिस थिंग. क्या नाम है वो टीम का, भूल गया मैं. बट बूम, सैडली आपने चारों प्रेडिक्शन बाहर हो गए. बट गेम्स तो मस्त है. बेट बूम में लास्ट प्रेडिक्शन था अपना, वो आउट हो गया टीम. और फनेटिक ने एक गेम जीता है अभी जस्ट ओजी से. ये थर्ड गेम है गाइस. जरा खतरनाक लग रहा है. हाय जयेश, व्हाट्सअप. मैं मस्त हूँ ब्रो, हाउ यू. हाय राजपाल आदित्य, व्हाट्सअप गाइस. गाइस आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं. कुछ तो मज़ेदार आने वाला है, पता है. तुम लोग को थोड़े क्या बोलते हैं, स्पॉइलर भी दूंगा उसके लिए, कल के लिए. और फिर अनाउंसमेंट भी करूँगा. यू हैव टू वेट फॉर इट. बिल्डिंग माई सिटी इन सिटी स्काईलाइन, नाइस वन. मैंने कभी खेला नहीं है बट मैंने देखा है वो गेम. मस्त है, टाइम पास है. के केओटीएल एम्बर, लेट्स गो. जकीरो टाइड एनिग्मा फुल एओई, फुल एओई. और लास्ट में कैरी, टीए कैरी. लेट्स गो. टेम्पलर असैसिन कि क्या लेगा वो पता नहीं. मॉर्फलिंग लेगा. कोच सनबी. हाय हिमांशु. रुक मुझे देखने दे किसका है उसमें नंबर. कल तो मैं जल्दी गया था तो कल का कर नहीं पाया. नॉट टॉक्सिक क्रेजी अनिकेत का है आज ब्रो. तेरा है ही नहीं उसमें. नाम किधर है तेरा उसमें? नाम क्या है तेरा? ड्रीम टू है क्या? तुम लोग का यूट्यूब नाम भी डालो रे तो समझ में आता है, पता है यूट्यूब पे जो नाम है. कोरोकी माइंडसेट टाइट टी ए गिव्स यू एवरीथिंग. यस. डैमेज भी देता है, वही स्टन भी देता है, मार्मर माइनस देता है, टावर पुश देता है, टैंक देता है, फ्रंट लाइन देता है. देता तो ज़रूर है भाई. तेरा अभी तेरे पहले दो तीन है, उनका करना पड़ेगा पहले. थ्री थ्री पेंडिंग है तेरे पहले. सैडली नहीं होगा आज तेरा ब्रो. क्या लगता है दोस्तों, गेम थ्री ओजी और फनाटिक फनाटिक. रुको देखते कितना स्कोर किया आपने आदमी ने. 32. ठीक है, नॉट बैड. K1 ने अच्छा स्कोर किया बट इसने कम किया यार. इसने कम किया स्टिंगर ने. बट कोई नहीं, अभी तक अपने दो प्लेयर्स बाकी है. ये दोनों देख रहे हो क्या? फनाटिक जीतेगा. मुझे लग रहा है ओजी जीतेगा माय फ्रेंड. वाइपर बैन किया है देखा. टीए टीए लेना है वो लोग को. वो टाइड को भी काउंटर करता है. लेट्स गो टीए. मैं युरागी लाल या दोनों बेकार खेल रहे हैं, सैड. लाइन लाल तो खेल रहा था रे डिसेंट. रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, माय टीम गेट्स. अरे यार मैंने पढ़ा नहीं, सैड. गोल्ड डीजे से होप है. डीजे ऑड करता है तो मिलेंगे तुझे पॉइंट्स. निंजा बूगी का देखा ना यार बेचारे का. गलत मतलब वो गलत है वो रीजन किक करने का. चाहिए तो उसको बेंच कर देते. या कुछ और रीजन, मतलब रुकते थे. ऐसे भी मैचेस नहीं थे कुछ. पहले ही अज्यूम करके उसको ऐसा किक कर दिया ना. बहुत गलत किया. थोड़े दिन के लिए स्टैंड इन लेके खेलते जब तक थोड़ा प्रॉब्लम उसका चल रहा है. बहुत गलत हुआ वो. हुडविंक. क्या हुडविंक कोर खेलने वाले हैं कि ट्रिएंट ऑफलेन है? क्या है ये पिक्स नहीं समझ रहे दोस्तों. ऑफलेन कौन है इनका? और कैरी हुडविंक लिया है क्या वो लोग ने? व्हाट इज दैट हुडविंक पिक गाइस? मॉर्फलिंग.
बोला ना टीए नहीं तो मॉर्फलिंग लेंगे वो लोग. मिड हुडविंग कैरी एम्बर, हाँ वैसे भी हो सकता है एक्चुअली. दिखा है ना. ओ नहीं, डीजे हुडविंग खेल रहा है, रेवन सीके खेल रहा है, आर्मेल केओटीएल खेल रहा है. एम्बर सपोर्ट है, एम्बर सपोर्ट है. बाप रे. क्या ऑफलेन है? एम्बर ऑफलेन है, ट्री सपोर्ट है. ओ नो, ये क्या है भाई, एम्बर ऑफलेन. जी वेल प्लेड. हाय आसाद खान, व्हाट्सअप भाई, व्हाट्सअप ब्रो, हाउ यू. सपोर्ट हुडविंग इज मच मोर वैल्यूएबल ऑब्वियसली, क्योंकि वो थोड़ा वीक हीरो रहता है, पकड़ा गया तो मर जाता है, इसलिए सपोर्ट से ज़्यादा अच्छा रहता है. पोजीशन ले सकता है, फार्म करने के लिए ज़रूरत नहीं, उतना छुप छुप के सेटअप कर सकता है. लेट्स गो ओजी, लेट्स गो ओजी. लेट्स गो ओजी. कुछ नहीं, मैं कुछ देख रहा था. आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ डोटा आई फील आई नो वेरी लिटल. ऐसे ही होता है भाई, डोटा के बारे में किसको नहीं पता है. डोटा इज अ वेरी हार्ड गेम. इट्स नॉट अ इजी गेम माय फ्रेंड. ओडी पिक्सल मस्त हाइप है. यस, ओडी पिक्सल तो अलग लेवल का हाइप करता है. They still are going to be putting it on that carry and switching things up to put jabs in that off lane, picking the break, the DJ Hoodwink as that last pick, sticking with their guns, going for this tree. ब्रेक है वही रूट, इजी एस्केप, स्लो टू. Pretty good matchup for him versus that Pango. हाँ सपोर्ट पे ज़्यादा रहता है ये वैल्यू उसका, कोर पे है नहीं है. हेलो पड़ीला भाई, पृथ्वी खेर, ओ थैंक यू सो मच भाई सब्सक्राइब करने के लिए. फसल फसल, ओके ओके, मैं मतलब क्या लिख रहा है. थैंक यू सो मच मैन. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हाय डेक्स्टर, व्हाट्सअप. कॉपीराइट लगता है रे. हाय फैंटम, व्हाट्सअप. ओ उसको मारने के लिए रुके. ओ मर गया ये. ओ माय गॉड, व्हाट अ किल. Got to give respect to that one. Nice play there from Fnatic. Immediately going to kill their ward too. DJ's like, nope, we're not going to give you guys anything out of it. वार्ड भी डिवर्ड किया वो लोग ने खुद से ही, डिनाई कर दिया वार्ड. उसका वैल्यू मिल गया वो लोग को वो वार्ड का. अच्छा प्ले था फनेटिक से ये, वेरी गुड. And when you sort of see the sort of heroes that Armel's going to be up against this time, is this going to be a game where, you know, with a good start, गुड स्टार्ट. मिड वाले को किल भी मिला है. Very good start. Against a Kotl that gets a farm start. It's really hard actually with their heroes. It's going to be a lot of pressure on BZM to be able to match the early movements of Armel. Because if you look at the rest of their heroes, how do they get on top of him? Jakiro, Enigma, Tidehunter, these heroes are not going to do that. It's not going to be the Morphling who looks to get them out of an early game with Armel moving around. So it could be a game where Armel is able to just completely take over with these rotations. I mean, and an excellent game, of course, last time from the mid. And that game too, Kunka performance was perfect. Yeah. The boots of travel timing is going to be one of those like 6 to 8 minutes that we've seen so commonly on these coddles. And yeah, pressuring side lanes. Like we mentioned, it's a bit of a greedy style from OG again, going for the Tide and the Enigma. Let's go OG. It does feel like Fnatic, they could. वो फनेटिक बहुत मस्त खेल रहा है, not gonna lie. Fnatic is playing really well. Already off to a much better start than the last game, 3-3 for the 2-1.
Of course, last game we did see, you know, the struggles very much for Tiger on his Enigma to find the opportunities to get the big black holes. This game, how sort of easy is it for him to find those chances to get in? It's a lot easier. He only really has to play into the tree route later on once he does have the BKB. The only thing is he does have to be careful because at some points early, depending on how big the RML Coddle is, he literally can just run around and he doesn't even need to be this one to cancel the black hole. They might just snowball, get these kills, and just group up and push with the Coddle behind healing. And Enigma can just get one-shotted. That's what we've seen from these Coddles so much if you are able to just be that zoomy monster versus these heroes. Seeing the mid BZM starting to take huge amounts of damage here from Armel. Lining up the blast. He has got his bottle on his way out, BZM. It gets harder and harder. It really does for any sort of melee hero. You're going to be consistently under threat against the spam from the Coddle. See bottom. So yeah, so far here for Raven 8 and 0 against the 9 and 0. Both cores, either side getting an equal amount out of this. I think Jabs will probably suffer the most out of it. Yeah. It's going to start becoming a lot more difficult for him to step up versus the harassment of these two ranged heroes. Unsure if DJ is going to be able to offset it, but we shall see. And in terms of, you know, from ड्राफ्ट वाइज मुझे ओजी का भी अच्छा लग रहा है ड्राफ्ट सच कहूँ तो वो ऑफलेन क्या बोलते हैं एम्बर क्या उतना कर पाएगा कि नहीं पता नहीं ऑफलेन एम्बर से क्योंकि एम्बर थोड़ा लेवल डिपेंडेंट और थोड़े से आइटम डिपेंडेंट है मेनली तो लेवल्स चाहिए एम्बर को तो आई एम नॉट श्योर कि वो वर्कआउट होगा कि नहीं easily farming each and every wave with the blasts. So they should have, on Fnatic, they should have two lanes that go very well for them, right? Raven, I don't believe they can pressure him at all with an Enigma Tidehunter. They'll be able to deny some of these, a little bit of the farm with this, the conversions, but won't be able to pressure him too much in terms of last hits. Amar, he'll be able to farm down here nicely, though. Yeah, not really a hero that Fnatic's going to be able to kill in return. This Tide, once he has a few levels, very hard for these two to make moves upon. Look at Armel. Holding the creep wave so they can blast the small camp and try to deny it away from BZM. Lining up things very, very nicely as he stays pretty much over. What's up, chat? इतने शांत क्यों है आज chat? इतना ये हो के देख रहे हो क्या concentrate करके? OG versus ये? Yes, TB. Is he going to be able to get out in time? Easy TB. Tiger out of there, making the correct call. ये आमर टाइड खेलता है क्या? पहली बार देख रहा हूँ शायद से इसको टाइड खेलते हुए. अमर. They tend to do this also whenever they have the double melee, whenever they're playing with Ooh, मार दिया. Yoragi caught very, very low with a sleight of fist. Jabs takes him out. We'll see it again here on the replay. Shifted a pretty low on the HP. On that strength, it's a level 2 sleight of fist. Wow. DJ खिलाड़ी. Nice play from DJ. Got to play it a little safer up there. They almost. Oh, he's come back into the lane. They've got the setup once more. Yoragi. As soon as he heads into the lane there, returns to try and farm with the TP in. He gets brought very, very low once again. He's really दो बार मारा है. against these two, especially now the levels are there for Jabs and DJ. Okay है. Thunderstruck ये third match है best of 3 में से. 1-1 हुआ है 1-1. It's the third match. जी आ जाओ पार्थ. Dominance is now going to start. BZM also hitting the 6 though at a decent time. I think BZM's going to have to be very. डिस्कॉर्ड पे आ रहा है कोई तो आ जाओ टाइम पास डिस्कॉर्ड पे बातें करेंगे ये गेम देखते देखते. ये अटक गया वो. ठीक है कॉलिंग रहेगा फॉर फर्स्ट फेल भी. Indeed on the CS, Yoragi getting the least out of the lanes. DJ has a bracer. That's cool. With these extra bit of stats, making him much less of an appealing target for the two of them. Yeah, that's very different. This just does want to be a little bit tankier, not have to keep bringing out all the regen constantly. Very cool. Jabs, he will go for boots this time, so not going for the vessel just yet. Hi Parvez, what's up? Hi Varun. Apply a lot of pressure on this Morphling from what we've seen. Slow hero whenever the lane is pushed. Throwing all the spells onto him is working nicely. DJ now going to check the runes, trying to prevent BZM from getting that power rune. Is BZM going to get lucky? Let's have a look. I'm out. Balance. Line up a blast, so BZM goes for this. It will take a lot of damage, and as it is, it will spawn top. It is an invis room. Might give DJ the chance to set up for a kill.
Bottom lane. See it in bottom. Oh, Move in. Again, this is the Fnatic is the doing it, target guys. they go for. They find Tiger. They're Fnatic on top of him. He can't do anything. फैंटेसी का स्कोर मेरे अभी तक ये गेम का एक प्लेयर है मेरी टीम में, बीजीएम है। तेरा कौन सा है? तूने डाला है कुछ पार्थ? आवाज नहीं आ रहा है। हाय रैयन परवेज। ओके ओके, तड़प रहा है तू, पूरा अटक रहा है, तेरा आवाज डिस्को वाला आ रहा है, रोबोटिक। चल तो रीजन कर ले, अभी भी रोबोटिक आ रहा है। He's hitting the timings that he'd hoped for here. They might even need a lane ward top. Okay, they do have the lane ward because he could just TP up there and get a blast from tree line, and Yuragi's just dead. And I'm already seeing Armel TPing up. I think it's really high potential for Yuragi to just die in one shot. If Yuragi's ready for this. भाई मरेगा वो, ये वेव में मरने वाला है वो, देखना। He's dead. Oh my god. Beautiful movement here from him as Yuragi not ready for him to come and make that play off the back of that quick box timing. युरागी 3 बार मरा है अभी तक, और मॉर्फलिंग का ऐसा स्टार्ट मतलब गलत है। टुंड्रा का 2, क्या टुंड्रा का 2? आज टुंड्रा का मैच नहीं है भाई। डहाक, युरागी, बीजीएम, टाइगा और स्टिंगर। स्टिंगर कम स्कोर किया, मैंने डाला था K1, स्टिंगर, डिराचियो, बीजीएम और सेलेरी। कुछ बोल रहे तो तेरा आवाज नहीं समझ रहा है पार्थ। He's turned up, but Jabs and DJ, they're here ready to try and deal with him. BZM, he's not going to opt to get involved in this one. as Armel. भाई ये क्या खेल रहे हो? हेलो फनाटिक। We've seen it many times. The mid cot will get out of control already. 159 हुआ, कम है फिर, क्योंकि तेरे सारे हो गए। मेरा अभी तक गेमिंग ग्लैडिएटर्स के 2 प्लेयर्स है और कुछ 100 प्लस है मेरा। He's already getting in underneath the tier 1 tower. The 3 of them ready to set up on the tide. Let's see if Omkar can play his way out of this one. The stun into the blast. He's got any further escape. He's caught in the nature's cross. He's going to try for the TP out. ये उसने पॉइंट बचा के रखे कि स्टैट्स लिए है? From Raven and the Phantasm. Fnatic picking up another 7-0. उस पे पॉइंट्स बचा के रखा है कि क्या है? वो टाइड ने 7 लेवल था वो, कि स्टैट्स लिया है? देखना पड़ेगा वो गेम में जाके। Between Jabs and Omkar. Getting a little bit spicy here in the early game. Fnatic. It's a killer early game. This laning phase is disastrous for OG. I think as you said before, eyes are going to be on towards what BZM can do as the Pango. They need him to alleviate some of this pressure that Fnatic's applying in all 3 lanes. His moves are going to be crucial once that diffusal blade's done. He's just a recipe away from it right now. भाई तू नेट चेक कर, तेरा पूरा रोबोटिक आवाज है तेरा। Armel's gonna have the vessel done any moment now, so versus that morph, Yuragi. आवाज अटक रहा है तेरा आवाज। They're gonna have so many different ways to स्ट्रीम पे सुनेगा तो समझेगा तुझे। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो कम आ रहा है आवाज और फिर अटक भी रहा है। बहुत कम है। हेलो बोला तो आवाज आया मुझे, बट बहुत कम है। And now top tower likely to get brought down, and now the vessel is going to be done. Okay, they'll glyph the wave, so stall it out for a moment. But that next situation, there's going to be a vessel on that Morphling, and he'll die from the blast as well as the Hoodwink connection. Where's the rune going to be? BZM, again, it spawns on the opposite side. Trying to get over to contest this from Jabs, but Jabs will grab it and get away. Gives him the high five as well. Hi Monty, what's up? 7-0 कैसे लग रहा है रे ओजी के सामने? वियर्ड लग रहा है। They can get in and find some sort of combo between the Ravage, the Black Hole and the Rolling Thunder. It's a lot of lockdown. It is very cooldown dependent though, and we've seen already, Fnatic, they're not going to be playing around much cooldowns. Armel, Vessel's done. It's already out on top of him. Top tower going to go down as well. And Raven, he's top of the board with that coddle, getting the free farm down bottom. ओजी कैन लेट गेम, अभी मिड गेम में जब अल्टीज आएगा एनिग्मा वगैरह का टाइड, अभी करेंगे वो लोग ग्रुप अप करके फाइट। देख बोला ना ग्रुप अप करके कर रहे वो लोग फाइट। ओ
And there's a root. It's going to turn his attention over towards Raven and connects with the first rolling thunder. ये They're trying to सर्वर dive in कैसे for this, चेक but करता है? Armel, he's already come in, taken अभी out ठीक हो गया Tiger. तेरा। They've got the stun तू control नहीं चेक कर on सकता है। and BZM, another blast मेरा है, from मैं ही Armel. चेक कर सकता हूँ सिर्फ। सर्वर होस्ट सर्च कर सकता हूँ। But he's sticking solo here to the वैसे ही Spirit बोल रहा Festival. हूँ। Another change from Jabs. Hold back वो BZM, the सिंगापुर pop के the वहाँ पे Raven, कनेक्टेड है, इंडिया में some of them, कनेक्टेड है, and वो looking चेंज कर over सकते towards हैं क्या Armel, हम way चेक? forward, but Armel, he's He's still there for alive. escape. नहीं, Raven तू gets the तू नहीं control चेक कर over सकता। BZM. सर्वर का ओनर है, वो चेक कर सकता है। वही तो बोल रहा हूँ मैं तुझे। ओके हाँ इसलिए सर्वर में इसलिए ओके ओके They want more. पिंग चेक कर सकता है तू। पिंग और वो सब तो परफेक्ट है, नेटवर्क तो परफेक्ट दिखा रहा है। क्या? OG just cannot take नेटवर्क anything तो away from एवरेज Fnatic पिंग here. 17 Fnatic एमएस की just है। crushing them each and every time, and that point we saw, you know, current OG, they ping is wanted to 10. try and set up for some फिर sort तेरा of team fight. हेडफोन्स का इशू है, Fnatic माइक just का। come in, Armel immediately माइक का इशू था, removing वो Tiger पता नहीं from the मैंने fight. अंदर सेटिंग्स And में OG, जाके they ऑन just ऑफ can't किया deal with the amount of ऑटोमेटिक damage डिटेक्शन Fnatic माइक का, can freely throw out. तो वो भी है ठीक। 3,000 damage from the Coddle on that last मैंने fight. डहाक, Surprise रेवन, here, hitting लाल, some टाइगर net और worth सैलरी records लिया from है। Armel on his सब गलत start लिया that he's तूने। had this game with the Coddle नहीं मैंने बोला 5-0-3. सही, मैंने रियल Something टीम we haven't बनाई even है gotten to बहुत। touch on is a build that he can go for versus a Morphling that is probably one of the best ones you can, one of the best items, an E-Blade. If he's able to get it because of the changes, ओल्ड he ओजी प्लान। uses the stats युवरागी के पास फार्म नहीं है। that you use it on. So a Morphling who is fully on Agi, that could be pretty brutal as well for the burst damage. कल We लाल already ने see बहुत these फायदा systems करा है। 11 to 45 0. point। Armel किसने? out of control. Yeah, Fnatic as a लाल whole की just वजह से crushing it again. 45 They had a हाँ क्या? game one, but game two हाँ announced और this Wow. टाइगर ने Fnatic 38। playing at a pace that कल मेरे को OG इसने is दिया था struggling पॉइंट्स, क्या to नाम है? deal with here on the main stage. व्हाइट मॉन 49 पॉइंट्स दिया था। Tiger. 16 को how am I top 10%? Armel has got backup connecting with him. Okay. Jabs Making going to make the active। move on towards Tiger. There's the pushback कल setup का from किया TJ. जिसने? Tiger's gone. 12-0 है भाई, क्या चल रहा है? हेलो, For them to make these moves across the map because they have so much. एक kill नहीं मिल रहा इनको। Very cooldown reliant. Don't have easy ways to just stun and kill somebody besides just BZM, who's yeah, being toyed with. पर He even knows नेटवर्क himself देखो that ना, he cannot नेटवर्क commit 2 onto के Jabs, has to आसपास ही swashbuckle away डिफरेंस from है, the बस pushback अगली from गेम DJ. है नहीं तो नहीं, पर बहुत फिर ही भी। है। Trying to line up an opportunity, but again, अरे ये another देख कैसे strike तड़प रहा है takes out बेचारा the सेब। BZM's in trouble. He's going to pop the rolling thunder just to survive and get out of it. The Barely. slider fist nearly killing him. BZM having to roll back to base. And look at Jabs' item build. रेवन गेम 2 बहुत Ever मस्त खेला we're था। gonna see a Vlad's Ember Spirit into अच्छे a पॉइंट दिया pretty रहेगा good जिसने भी रेवन लिया है। item. रेवन के 30 Gonna गन get मिले it. मेरे को। Very good timing. अभी तक गेम 3 होना है, इसमें कुछ शो दिखाया तो 40 हो सकता है। They're just diving. Ready to They push see a for hero and objective. they're बेडरूम वाली कौन जीता? BZM has बेडरूम the हार counter. गए। It's still on cooldown. We'll be able to कमबैक switch किया the ये लोग ने, बीस्ट कोस्ट ने। हार रहे थे वो लोग। BZM, he's going to be going down. बीस्ट As कोस्ट पर Armel, वैसे unstoppable on the लाइक keeper of the उसकी स्टोरी line. पता है? Good क्या? God. ये लास्ट टीआई के पहले शायद टीआई में Immediately they just dive right. right past हाँ। the to get on top of him. They know that BZM तो is the only टीआई way के पहले for उनके OG पास back पैसे in this नहीं थे game. कैंप They just करने keep के, killing him. वो पता है आपको? OG just वो has कैंप no करने way के to पैसे impact the map. के बाद 13-0 ये सब नहीं Armel पता है मेरे को। goes top immediately afterwards. मैंने Kai इंटरव्यू is में done. सुना था वो बंदे के तो वो इसको उसका कैप्टन था ना उसके इंटरव्यू में। See Raven, very likely to have his BKB ready for the next fight. Just a rest. अभी of the एक और away. सेट Once होगा ना that's इसके done, बाद, ये थर्ड खत्म होगा उसके very बाद। little that OG can do Yes. to kill him through it. Again, pressure on Tiger. गेमिंग They ग्लैडिएटर्स picked up वर्सेस the blink बीस्टकोस्ट। dagger. They've got to have some insane black hole once Okay. more. They किनी, need to have एक that if मिनट। they're gonna have वो any chance स्पॉट of turning एम्प्टी है। रुक। हाँ, गेमिंग ग्लैडिएटर्स वर्सेस बीस्टकोस्ट है। yourself already. He might just get दो caught by a स्पॉट blast and एम्प्टी die. है। He could just die to blast flight. Like ब्रैकेट में just भूल literally गया, रुक। Random things being thrown on the ground, even like a nature's grasp as well too. It's so hard Not here gonna for be OG. कल कौन से मैचेस होंगे फिर? टुंड्रा टीएसएम होगा कल। टुंड्रा टीएसएम है, थंडर प्रीडेटर वर्सेस टीवीडी। ये भी जो है, तीसरा कौन सा होगा? TVD वर्सेस TVD। ओह, गेमिंग ग्लैडिएटर्स वर्सेस थंडर अवेकन होगा मतलब कल। ये अटक गया। हेलो? क्या है? मतलब नेट गया। 14-0 हो गया रे, 5 की लीड 15 मिनट में। इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। They know that, as you're saying, there's गेम no 3 है भाई, मॉन्टी है। BZM is dead. They can't do anything. थ्रो कर दिया सीधा ओजी ने गियर पिक्स करके। Very impressive. Level 14 about to be up for Coddle, for Armel. Max Solar Bind. And yeah, E-Blade on the horizon very soon. About 1,000 more gold. How's the पोर्टल के Manta पास looking for your Augie? It's still so मॉर्फिन far away. Really is. हाँ, वो तो होता ही है। क्योटेल स्टार्टिंग में वैसे ही रहता है, मतलब पूरा गेम वैसा रहता है वो। गेम क्लियर जबरदस्त है। हाय आनंद, व्हाट्स अप ब्रो, हाउ आर यू? भाई आनंद कैसे चल रहा है? बहुत दिनों बाद आया है तू।
गायब हो गया आनंद। एलिमिनेशन मैच है, यस गाइस एलिमिनेशन मैच है कि पहला ब्लैक होल, लेट्स गो। और वो भी नहीं मर रहा है, मर गया बाबा फाइनली, बट लेके गया वो। अरे 2 हीरो मर गए उसके लिए। भाई कि वो उनका मिड मरा, बट सामने वाला मिड +4 मरा, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। So that the Morphling can potentially get Manta, so he doesn't just get one shot in every single fight. Small gain, but something necessary that OG needs to do. Don't think Fnatic's too fussed about it. I don't think so at all. I mean, Uragi was having some space to push onto the tier 1, but of course with John well on the tree and नहीं मतलब फनाटिक जीता तो भी मेरे को बुरा नहीं लगेगा, दे आर प्लेइंग गुड, डिजर्विंग विन रहेगा उनको, वो जीते भी। ओजी जैसे टीम को मारना मजाक नहीं है भाई, ऐसा स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं। कितना ओपी खेल रहे हो लोग, ऑफलाइन वो ये करके आउटप्ले करके। अमर इज डेड, बच गया। अरे 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 अरे, ये किधर से है भाई, एक स्कोर कम कर रहा है अपना बीजीएम। ये प्रेशर में क्रम्बल हो रहे हैं। पहला लैन है वो लोग का। फर्क तो पड़ता है, थोड़ी लैंड ज्यादा भाई फर्क पड़ता है, और वो लोग का एज पता है ना, 16-17 साल के बच्चे हैं वो लोग, फर्क तो पड़ता ही है भाई। इतना बड़ा लैन तो फिर भी जो स्टील ट्रैक के हिसाब से खेल रहा है। फनाटिक वाले सारे लैन प्लेयर्स है, सारे के सारे लैन खेल चुके हैं बहुत सारे, इनके प्लेयर्स नहीं है नए। फिर होगा नहीं, बट ये मुझे लग रहा है लैन प्रेशर ही है। नाइस बनाना, एक्चुअली अच्छा है। फैंटम को क्यों बुरा लगेगा, क्या रे? हाय तने, व्हाट्स अप? डेड? नहीं नहीं नहीं। Of course, for Fnatic, Roshan is up. They know that they can go for this with very little really to worry about. They don't even need to commit all their heroes. I think they can do that with just 2 or 3, and Armel can still. अरे सारे नहीं बोल रहा हूँ रे, 2 प्लेयर 3 प्लेयर शायद से नहीं खेले, वो मुझे उसका नहीं पता युवरागी का, बट ये दोनों तो पहली बार लैन खेल रहे हैं। क्या नाम है, बीजीएम और अमर। टाइगा और सेप तो खेले रे, उनका लाइफ ही उसमें गया है। हाई वॉरलॉर्ड। अरे ओजी सपोर्टर तो है सब लोग, बट सामने वाला टीम अच्छा खेल रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा बोलना चाहिए। Aegis, let's go. Will be the Manta done for Uragi, so at least something to give him some sort of chance of getting away from a few of the setups that Fnatic do have in their lineup. He has a way to protect himself. BZM though still under the gun. And jabs with the high fives continues. Fnatic, they're smoking up to connect over here. They know that OG's trying to push it around this area. Set up again with a bushwhack. Oh, bhai. From DJ, an easy kill on set. DJ showing time after time that he's got this perfect angle. OG getting caught out numerous occasions here by the distance of the bushwhack that DJ is able to throw out. He's been pretty much perfect on this Mirana and this Hoodwink afterwards. भाई सीके हर गेम में बैन नहीं तो पिक होने ही वाला है, इतना ब्रोकन हीरो है वो। एससीए प्राइड नहीं, ओजी का तो स्क्वाड ही अलग है ना, बट नए प्लेयर्स है सारे, बट एससीए वाले मस्त खेल रहे हैं। आर्मेल मस्त खेल रहे हैं मेनली। Are they able to do anything to stop them? Down 20-1, 7k lead for Fnatic. OG, they do have, as I said, a फैंटेसी पॉइंट जा रहा है फैंटम का, नाइस वन। They can't turn this around with anything less. मैंने एक ही प्लेयर डाला था ये ले इसमें से, बीजीएम। If Fnatic's able to avoid them, reset in the team fights, Fnatic's just going to continue to overrun them.
Armel's just way too much of a nuisance. And now at this point too, it's a Raven is also a huge problem. He's gonna have heart soon. Will they ever even have damage for this season? भाई वो सोच रहा था रैविश डालू कि नहीं. Go for the control, but see that blast there. Tiger and you're getting rolled so low. Over to the side, Raven's just going to commit it with the BKB. BZM will attempt to roll out of this one. He'll get out to the side. Fnatic, he'll turn Oh it no. He'll pop the ground. Wait for ये it. They're trying to ठीक है put him ठीक in है. the bushwhack. He's caught ओ the भाई ये ball. बुश पैक मस्त मारा है उसने बड़ा भी. They do still get the kill on the call. Rolling ओके as well, ठीक है. controlling jabs. OG, they found two. तो 2 कोर मिला है. इसका एजिस भी मिल गया तो भी वर्थ इट रहेगा. Trying to come in to take him down the ones. Should be able to chase him out and achieve exactly that. They still have the black hole as well available. ओ ब्लैक होल डालने वाला है ये. He's still holding his ground. ओ BZM क्या मर गया रे. सैड 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 सैड. KOTL आ गया और अभी दूर से. It's a wasted buyback right now from Armel. ठीक है बायबैक हो गया मिड वाले का सामने. फेयर क्या है उसमें. आर यू स्ट्रीमिंग फाइनल्स. यस सब कुछ स्ट्रीम करूंगा बराबर अपने स्ट्रीम स्लॉट के टाइमिंग पे ब्रो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. रुक मुझे देखने दे फाइनल्स कितने बजे रहेगा. 19:30 IST 6:30 बजे. मतलब आधा फाइनल्स होगा तभी मैं स्ट्रीम कर लूंगा. वो 6:30 बजे तो नहीं स्ट्रीम कर पाऊंगा. मैं शायद से बाहर जा रहा हूँ. मेरी बहन का नहीं करूंगा मैं स्ट्रीम. मेरी बड़ी बहन का बर्थडे है. सैड. कोशिश करूंगा मैं पक्का. 19 is 17 17 सॉरी 7. सैड. मैं शायद से बाहर जा रहा हूँ डिनर के लिए. सैड सैड सैड. पक्का नहीं है. कोशिश करूंगा मैं. देखते क्या बोलते हैं मेरी बहन. अभी लंच के लिए बुलाया जाने पड़ेगा कि डिनर के लिए. अरे फेयर मतलब जो ब्रोकन हीरो है वो स्पैम करेंगे ही ना लोग. एम्बर का इन्वेंटरी देखा क्या. ब्रेथ पैक्ट अंदर घुसेगा चेन करेगा. ब्रेथ पैक्ट वाला DPS माइनस डैमेज प्लस उसका एम्बर का शील्ड का डैमेज. खतरनाक. तू चुप रे फैंटम. ये लास्ट मैच नहीं है. इसके बाद गेमिंग ग्लैडिएटर्स वर्सेस बीस्टकोस्ट है. Pull back for now to rectify the state of the other lanes. We'll get Armel down towards the bottom. Raven will head over towards the mid. Just happy in the knowledge that they've sort of forced OG to react. पर डोटा गेम कैसा कोडिंग किया है सोचो ना रे. छोटी छोटी चीजें रे. ये दबाए तो इतना ये वही आता है. वो दबाए तो उधर ये जाता है. क्या क्या नहीं है ये गेम में. कितना कॉम्प्लेक्स गेम है बनाना. मैड जो भी है जो मैड रिस्पेक्ट है वो आदमी के लिए जो इतना सब कुछ सोचा. आइस फ्रॉग. आइस फ्रॉग तो पैच मुझे लगता है आजकल आइस फ्रॉग पैच नहीं करता है. ये वाल वाले ही करते हैं. आइस फ्रॉग पैच करता है तो अभी बहुत ब्रोकन रहता है. कुछ ना कुछ तो नया लाता है. मैप चेंज करता है. कितने टाइम से मैप चेंज हुआ ही नहीं है. कंसंट्रेशन भी रहा होगा सिर्फ अभी. पता नहीं यार. वो मैप चेंज क्या किया वो लोग ने. तो सिर्फ टॉवर्स आगे पीछे कर लिए ऑफ लेन वाले. What new in CK? Why is it broken? CK का थर्ड स्पेल क्रिप्स को 1.5x या कुछ तो डैमेज करता है. तो वो फार्म भी फास्ट करता है प्लस फाइट में डैमेज करता है. फ्रंट लाइन हीरो है. थोड़ा से फार्म पे फाइट कर सकता है. वो इसलिए ब्रोकन है. उसको रुकना नहीं पड़ता है. वो राविच KOTL चाहिए वो लोग को कुछ भी करके. नाइस. They got him. BKB है अभी तक बट हार्ट है उस पे. क्या पका रहे भाई. बहुत फाइट है वो. बाय द वे हाई यंगेश. हाई नहीं बोला मैंने. मैं घर नहीं हूँ वीकेंड पे वरना मैं डिस्कॉर्ड स्ट्रीम करता. सैड. मैं कोशिश करूंगा मतलब. हाय राकेश. क्या नाम है. बहन का बर्थडे है. विश हर हैप्पी बर्थडे मैन. नाम नहीं समझ रहा है भाई मेरे को. कुछ गलत नाम ले लूंगा मैं.
40 seconds, Armel. ऐसा नाम थोड़ी होता है भाई. राकेश, anyway, happy birthday to her. Long time. He is God bless her. Recovering. He's closing that gap. The BKB pretty much done on top of the Manta style. So now, no longer an easy target for these cores like the mid-cottle to burst through it. बट ओजी ने थोड़ा नेटवर्क देख रहे क्या? Signs of life. होल्ड किया है. And they're closing that net worth. Only a 1k lead now. मस्त होल्ड किया है वो लोग ने नेटवर्क. Huge amount of kills they were picking up in this early game. ये बंदा ट्रोल कर रहा है शायद. OG वो finding समझा नहीं यार क्या लिख रहा है. मैं विश कर दिया भाई. The buyback really nice. Like the reset away, being able to find Armel afterwards, that really slowed down his growth. वो फन वाले नाम होते हैं ना. हाँ वो होते भाई, आते हैं ना कभी कभी. वो नाम लेने बोलते हैं और फिर रिपोर्ट कर देते हैं. नहीं क्या वो वर्ड यूज किया बोल के. तो चैनल पे ये होता है प्रॉब्लम. Really being the big hurting one, but the follow-up kill. नहीं मैं उसके लिए नहीं फॉलो करता. मतलब मुझे वो प्रैंक मेरे को पता है वो सब. Armel, he's only been back for I don't fall for all this. He's gonna be back up very soon. भाई यार ये आदमी फार्म करता ही है कुछ भी. अमर Finish the BKBs. गेम में देखता हूँ उसका फार्म रहता ही है. The Ravage and Rolling Thunder. Yeah, they're going straight for him every time. Yeah. They know that Armel he is absolutely the one to remove from each and every team fight. But he will have it now for the next fight any minute. 10 सेकंड में रैवेज आ रहा है. Now more pressure really on OG, being able to get that quick jump, maybe trying to get the initial stun off before the BKBs pop, which is not easy to do. Oh, my BZM. But with the bushwhack, the ult, beautiful combo again. DJ making sure that Fnatic get back on track and finding these huge core pickoffs. They saw the swashbuckle. It's not like they have a ward there or anything. They saw the swash from the low ground, so they were able to just get the connection there. DJ with another असल snipe. में वो तो देखो अब 20k का डिफरेंस है फिर भी फार्म में कुछ 2k का डिफरेंस. हाँ ना. तो मतलब BKB's done. एनिग्मा भी है ना टीम में इसलिए. DJ too talking about how good his हम भी किया है प्रॉपर्ली. मतलब वो फॉर्म तो किया है वो लोग ने. अच्छा वो है भाई ओजी. provide is also pretty तीनों crazy कोर्स का अच्छा फार्म with है. Armel. Yes. Zero blade plus that. एनिग्मा ब्लिंक भी के भी. Insane damage वाओ numbers versus some squishy heroes. ये काम में आने वाला है अभी गेम में. बट वो लोग क्या कर रहे हैं देखा क्या? स्मार्ट खेल रहे हो जी. पहले जाके केओटीएल पे मार रहे हैं सब कुछ. वो केओटीएल मेन है वो लोग का. दूर से हील, दूर से वेव डैमेज. मस्त खेल रहे भाई. हाँ. और लाइक अभी तो वो तो वही करना पड़ता है ना केओटीएल के पीछे करने के लिए. उसके पास वो विस्प भी तो है. वो विस्प में फंसे मतलब ओजी डेड है. आया क्या? उसने बनाया क्या? मैंने देखा नहीं. From either team. आएगा ना कभी तो लेगा. नहीं बनाते वो कौन नहीं बनाता है? क्या बोल रहा है तू? तो गेम से नहीं बनाते क्या वो. नहीं बनाते. वो सपोर्ट पे बनाते थे पहले. मिड वाले पे कभी नहीं बनाते थे. वो तो लेट गेम बनाते थे. नहीं तो मिड वाले पे कोर आइटम जाते यूजुअली. Jabs is also, I अभी believe, वो with the ये tactics गया that है they क्या can बोलते go हैं? to. And now Raven has a shadow blade, so शॉटगन. initiate ईथरल ब्लेड गया है. फिर मुझे लगता है हेक्स वगैरह जाएगा वो ये गेम But में. it really is. It's all eyes on if they can catch this pesky old man. नहीं वो ऑक्ट्रिन कोर बना रहा है बीकेबी के बाद. OG सेकेंड गेम में भी सेम था. नेटवर्क डिफरेंस एनिमा की वजह से कोर्स के पास कम फार्म. She has the vision down mid. नहीं एनिमा तो ठीक है. he's gonna see your अरे 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 मर गया ये. सोलो किल. बाप रे. Oh, it's a huge one. शैडो ब्लेड और रोशन आ गया. Oh, ये क्या टाइमिंग है रे. Just being revealed, they weren't ready for that sort of movement. Buyback is going to come out from Yuragi. Sad He knows was. the Fnatic, they're going to try and keep this fight ये going towards जकीरो those भी jabs, मारेगा. pushing in far here towards the top, chasing out the support. Yes. They found Tiger. They see him say नहीं, He's बच गया वो. not going to be able to finish him off. Instead, they'll turn towards Tiger. He was Oh, trying to set up from no. behind in the trees. Fnatic finds him. Looking towards John well. They've got the slide chains out onto both of them. Bushwhack's going to miss this time. BZM able to roll forward with the Thunder. Yaragi fought back for this, and he's getting ये low भी खराब है already. वो Does have लोग stick. क्या करे. I mean, अरे extra pressure पका है right now on OG उसका to secure that रोल HP वेस्ट for हुआ. Yaragi. डायरेक्ट Mid वेस्ट हुआ. themselves into the pit, दो though. बाय हुए. DD was डायरेक्ट spawned. That करना ही might help. पड़ेगा उनको अभी. सैड सैड वरना सैड. रोज खेलेंगे. And we'll have that ready for the next move. एक भी डायबैक हुआ रोज चला गया भाई. Into a roach. गेम इज हार्ड गाइस. Way too much spam. 9 के लिए 26-4. ये ओजी है क्या? क्या है मजा के? Prepared with the detection, with the sentries down, they won't want to let Raven get away with that sort of easy इसमें initiation बचने again. के He लिए क्या just जुक steps मारा up. अभी. As I said, pretty much Break on his से. own, destroys Yuragi. They have a gem they purchased before, so now Yuragi's actually the one holding it. Raven
Was with that kill, still holding the top net worth there. 18k net worth, almost 5k ahead of that of the farmer Jiragi still. This CK absolutely massive. OG will smoke up still, trying to make moves here around their ultimates. Hi Marcos, what's up? If flipped up and Fnatic get the jump on him, he's going to be out of the fight for good. They're going to smoke themselves. They know something's up here. The smoke dispels. I'm going to suspect either OG being on the high ground or in towards the pit. Phantasm's used as well. They've got the high ground vision here, Fnatic. So a good area for them to fight around. Jabs. He's in. He's going straight in towards the backlines. He's making the jump all the way over towards Seb. Gets clipped on ice pad. Jiragi jumps in, BKB's up though. Jabs is going to be fine, and here's the back. Jiragi gets the BKB off in time, so Raven won't be able to continue to hold him down. Jiragi, with that BKB coming to an end, he's got to run. If they get any sort of further catch onto him, भाई मर गया वो मॉर्फलिंग डाई बैक but there's the E-Blade blast. He'll put the Manta style, try and continue the retreat. मरने तो वाला है वो Cut Jiragi down. There's the Ravage. Will clip. They're on Jiragi. They're focusing on Mel. They're trying to get rid of it, but it's Die back. taken out. The morph gone for 80 seconds. Raven, his BKB will finish. Can the rest of OG clean up the kills? Schwack controlling him off now. Raven, he's thinking about getting back in on this. He put the shadow blade. Oh, Jem. Took it to the side. Jem on the Oh ground. no, जेम उठाने के लिए तड़प रहा था सेब Bring down Seb. A second killer for Fnatic. Courier भी मर गया lost That was a dieback from Seb. Fnatic, they'll take the team fight. And this should be enough space if they want to. रोशन पड़ा है उधर अभी नया स्पेशल फ्रेश रोशन है उधर शांति से बैठ के जंगल खा रहे हैं कि रोशन अपना ही है करके नहीं कुछ नहीं कर सकते रे दोनों टीम रीसेट हो रहे एक फाइट ब्रेकआउट होगा तभी कोई मरेगा तो रोशन जा सकते थे वैसे नहीं कर सकते इसलिए तो वो जितना मिल रहा है उतना फार्म कर रहे थे that OG they have to focus or at least look towards this Ember Spirit to start things off. Early BKB उसका पूरा BKB वेस्ट हुआ देखा क्या they end up very vulnerable at this point. You're arguing with the BKB used and now the Manta, he's got nothing else to save him, and Fnatic they seize that chance to get in, take him down. Great control and grab. Raven holding his own BKB for this later portion, and once more DJ, he's never missing a hit with these ultimates. Flawless this game, 9-0 and 11. Raven, and he'll be able to just solo the Roche during this while we watch the entire replay. Yeah, OG not ये कितना तड़पा रहे सेब जेम उठाने के लिए We'll see the Aegis. खुश है भाई ये Probably the Shard as well, right? Yep, he'll take it. So Shard and Aegis now picked up. Raven continuing to dish. ब्लैक होल तो देखने ही मिल नहीं रहा है Any other core in the game. It really is the dream for Raven this game, right? He has an Armel Coddle. डीजे बहुत पॉइंट देने वाला है जिसने भी लिया है बहुत ज्यादा पॉइंट देने वाला है डीजे To kill the Coddle every fight, so he's got free reign to just walk around and do whatever he wants. And Jabs too. Have to give डीजे के आर्मेल भी बहुत पॉइंट देने वाला है क्या खेल रहे हो forcing the hand of OG. And that whole sort of sequence and taking the Roche has absolutely put Fnatic back at that lead that they built up so quickly in this game. That little bit of a turnaround or comeback that OG started to pull off, it's just gone, fallen away from them completely once more. Fnatic 29-5, 12k lead. They're ready to start pushing for the high ground. Yeah, OG only has like small instances where they can potentially look for those fights, as we mentioned a couple times. They need every single ult, and they haven't even been able to get off the black hole in any of these situations, because Tiger just knows it's going to get instant hands. Try and set up from the trees here. Raven, the BKB and the Aegis is a tough target to go for. As they begin to poke at him, a little damage being done. Jump forward, he's out to the side. Jiragi's edge going to turn. Does the CK pull him back? Oh, भाई nice. Okay. Oh, BKB force. Jiragi has to use that BKB there to survive. Raven with his own BKB will back off. He'll keep that Aegis protected. Make sure that he can maybe back off. Aegis बचा लिया वो लोग ने Push again with it. And OG, we're able to push him back and not having to commit. Aegis वेस्ट होता था ना उधर BKB ब्लैक होल होता था इसलिए वो नहीं मर सकता था उधर मरता था BKB ब्लैक होल थोड़ा कमबैक चांसेस हो जाते थे उधर अच्छा मूव था वो रेवन का उसने एजिस वेस्ट नहीं किया Expecting OG to feel comfortable coming out at the base now that they see the CK down bottom. Because Fnatic, even without Raven, they've got a lot of kill potential already. Popping the Eon disc on a mark. OG, they've got to be so careful about how close they get. BH में रोलिंग इशू होगा हाँ बाहर आता है हीरो रोल के धक्के से बाहर आता है वो ब्लैक होल से couple of rounds with the black hole maybe exactly what OG need to have a shot at turning another team fight. Definitely feels like they need as much as possible to deal with Raven. ये अटक गया अरे रे अटक गया He's going to be able to force the BKB out of Jabs.
Pango ulti for BKB. Was it worth it? Maybe. Creep wave around and look to take another tier 2 from OG. Close कर रहे हैं slowly. 29-5 OG versus Fnatic. Fnatic is 29. Do you guys believe it? क्या खेल रहे हैं Fnatic? Does have backup coming. See if they can bait in jabs. BKB is on cooldown still for 35 seconds. Nice path to set things up. BKB मारेगा Ravage. To escape this, he'll try and throw out a remnant, but he hasn't got one down already, so he's not going to get that far away at all. Another slight change from Yuragi. They'll punish Jabs being out and on his own on that top lane push. Jabs overplaying his hand there a bit. Good थोड़ा मस्ती कर रहे हैं Jabs. identifying that. The gem was not recovered though. It was hidden in the trees, so OG was not actually able to take that one away. So the courier, it's going to fly back up. Fnatic's going to be able to recover. ओ gem नहीं लिया वो लोग ने sadly. That does mean that it's very likely that for the remainder of the Aegis on Raven, Fnatic probably won't be able to force the high ground quite yet. वे उस 20 लेवल का है वो. फार्म देखो उसका. बाप रे. हुडविन के पास सेप्टर है. बहुत फैट है भाई. Ensure that Fnatic really struggle in trying to push this game to the next advantage. Yeah, keep the base in very good shape here. The defenses have been strong from OG and Fnatic. Struggling to really push to the next opportunity. As OG, the threat of the team. अटक रहा है यार ये. Fnatic will respect it. 50 seconds left on Aegis. Raven. One more round of the Phantasm. Trying to use that illusion to scout out the position of OG. Make sure that they have a clear read of the setup that OG's trying to get going from the high ground. Macropire's down though, will clear out the illusions and mean once more that they'll keep that tier 3 alive. Continue to watch OG just keep these lanes. मैं टाटा फाइबर. Immediately to respond. टाटा प्ले फाइबर. बेसिकली वो टाटा स्काई है जिसका नाम अभी टाटा प्ले हो गया है. Decent amount of gold during it anyway. Even if they didn't get a fight out of it. Last tier 2. There it is, refresher online for Tiger. See what he can do with it. Does mean that there's no buyback gold on him, so the move that he makes has to be without error. Satanic also on Yuragi. He's gone full defensive. Having to dispel the chains, the roots that are coming out, the spirit vessel, etc. There are so many different things. टाइगर कुछ करेगा तो ही होगा. Imagine, are we going to see them sort of hold back and wait for the next Roche? Do they try and risk an aggressive move towards the base without an Aegis? They can just wait on these high grounds, keep preventing the farm from OG. Still very easy for them to fight. OG starting to reach out around the mid lane. Won't find anyone for Fnatic. Fnatic staying grouped up together. एजिस चला गया ना. कब का गया वो? बॉटम पे सीच करने गए थे तभी 40 सेकंड बाकी था. Fnatic का मिड टियर 1 अभी भी हाँ ना यार. टॉप टियर 1 भी बचा है. OG not going to find anything in the jungle. Tower continuing to slowly fall. That's pretty big pickup. Timeless relic for Amar. Relic? Oh, and a big pickup for Fnatic. They found a leveler, so they needed the push. Oh. Gave it his blast. Timeless relic. मैं बोल रहा हूँ कि relic लिया. ओ भाई. Jay with the snipe. Solo kill कर दिया ये तो. Yuragi. They keep trying to poke and prod. सटानिक है बट उस पे अभी मॉर्फलिंग पे कुछ हो सकता है. Can you make the screen bigger? इससे और बड़ा नहीं होता है ब्रो. ये फुल स्क्रीन है. इन गेम वाला ही है. इससे बड़ा नहीं होगा माय फ्रेंड. They're thinking about something. He's going to go straight towards Raven. Commits with the BKB. Jabs on top of Tiger. Tiger will put the BKB. Oh no, उसको अकेले को वो तो कंट्रोल कर रहा है पीछे. He's holding it back for now. Amar locks down Armel, but the BKB's out. Armel looking to Okay, nice. टाइगर भी निकल गया उधर. उसका बीकेबी वगैरह बहुत कुछ फोर्स किया उसने.
ravages of Amar, making sure that the space is there for OG to get kills out of this. They turn to वो जा रहा है उस पे stun. BZM was waiting in position. किल लगा वो. Oh, अभी लगा. Comeback is real, guys. They're still going to try and keep this fight going. Buybacks are coming out. Raven getting himself into the invis. The bushwhack does catch on to Yuragi. Big burst from DJ. Not enough to kill him. Yuragi will live for now. Jabs continuing to force back the Morphling. Two buybacks from Fnatic. They need to find kills out of this, and they can't afford to lose anything themselves. Raven in with the control onto BZM. BZM gone. BZM gone. Amar put himself in front of that the snipe from the hoodwink. Could have potentially lost him too. Aggressive buybacks. And it's still scary. You know, these buybacks, sure, the Excuse Ravage me. is down, but as we've seen, Tiger holding back with a potential threat. He still has the two black holes ready to go. They probably really want to try to go for some type of push forward, but yeah, they know about those black holes. Genwall has held his route the entire time waiting for these black holes. I think he's only used it like once, and it was attempted for a Rolling Thunder, and he didn't even get it. But look what he's got queued up. He's like, you're going to go Refresher. I think he's considering going his own Refresher to be able to match Taiga. Huge mind games between those two players. Yep. Johnwell and Tiger trying to get in the heads of one another. Neither of them want to ult. Now OG. टाइगर पे फार्म तो बहुत है बट यूज करने नहीं मिल रहा है. वो एम्बर जाके उसको कंट्रोल कर रहा है पीछे. डायरेक्ट उस पे ही जंप कर रहा है. लास्ट फाइट पूरा फाइट एम्बर ने एनिग्मा को कंट्रोल किया, इसलिए कुछ नहीं कर पाया एनिग्मा. Three or four times now. Yeah, and he's got a couple of ravages ready to go. The refresh is ready to use on Amar. रोशन आ गया नया. सैड. ओजी को पता ही नहीं है शायद से. OG in a position where they're trying to deal with the waves, pushing in towards the base. Unlikely to be able to get out here and do anything about this. So Fnatic, they'll be able to take this. Who are they giving the shard to, do you think? I mean, they could give. I'm wondering if they give the Aegis even to Armel. It looks like Raven's preparing for it, but without a buyback on Armel. You probably want to see it on one of the other cores. Yeah, But looks like Raven's still going to opt to grab it. Okay. Raven does also commit his gold. Refresher मिल गया. And he's got a Scotty, and they'll give the refresher start to the tree. Okay, so making sure these overgrowths are always going to be available. I still really think he's considering queuing up the refresher for himself too. As funny as it is, he doesn't even have any mana, but he's got the mangoes prepped just in case. सेब भाई किधर? अभी तो रोशन लिया सामने वाले ने. अरे 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 अरे. Nice. Oh, nice. Nice. अरे बच गया क्या वो? नहीं, मार दिया. नाइस. ये बहुत मस्त टाइम किया उसने आमार ने. बहुत मस्त टाइम किया उसने. अभी ब्लैक होल आने वाला है. बट ट्रिएंट रुका है उसके लिए. अनदर रूट. ओह माय गॉड, व्हाट सीके मारा वो लोग ने. जो चाहिए था वो मिला. वो देखा क्या भाई? दोनों के बीच में जो गेम चल रहे हैं ना, वाओ. जो चाहिए था वो हुआ, बट उसने देखा क्या? दोनों अल्टीज उसके लिए रखे उसने. दोनों अल्टीज. अरे नहीं, वो भाई महंगा चश्मा है वो. गनर ऑप्टिक्स करके. वो उसका पहले से स्टाइल है. वो हमेशा पहनता है. वैसे तुम लोगों को पता है क्या? वो जो ट्रिएंट है ना, ट्रिएंट, वो रिफ्रेशर शार्ड बचा के रखा था क्योंकि उसका एक ही काम है ब्लैक होल रुकाने का. अल्टी से पहला ब्लैक होल डाला उसने, रुकाया. दूसरा डाला, दूसरा भी रुकाया. बट वो उसमें मर गया वो सीके सैडली. बट वो मस्त खेल रहा है ट्रिएंट प्लेयर. They're going to respawn and perhaps have a window for themselves to maybe do something as well. But having trouble. They're having a lot of trouble trying to get onto Yuragi. They can't get the initiations themselves. They can't kill the targets. Every single time, Amar is getting these ravages on the perfect targets. Ultimate defending with that much net. हाँ ना यार, पीछे रह के भी कर रहे हो अच्छा. Hi Nishnath. Since more shift is mana dependent again, so do you think AM is its counter again? No. मॉर्फलिंग का उतना ये नहीं रहता है रे. वो स्टैट्स आइटम जाता है तो माना बहुत रहता है. Yes, all good for the storyline.
have his refresher too, but हाय रितेश, व्हाट्स अप ब्रो, कैसा है भाई? he cannot cast it. He's actually gonna have to buy mangoes as well on top of it, or arcane boots to be able to cast his double. हाय वरुण, भाई कितने दिनों बाद वरुण, कैसा है भाई? How are you? You can't rely on that. Like, you have to be so quick to be able to like refresh and immediately get the root off. Even there, you saw the delay of like 1 second mattering, because he had to stop, pop mangoes, jump back in to attempt to stop the black hole. Here we go, fight time from Fnatic. Smoke up and ready. It's still 50-40 seconds until any sort of black hole is going to be available. पता है अभी ओजी को स्मोक थे वो लोग. Be back up that double ravage, and of course with that level 25, that increased ravage stun duration. ये भी ऑक्टरिन बना रहा है पैंगो पे. नाइस, जल्दी आएगा स्पेल्स उसका. In terms of buybacks for OG, just the two of them. वाओ, दोनों सेम रिप्लाई कर रहे हैं. 50 on the win probability. हाय विनायक, व्हाट्स अप? The case here. Fnatic, they may have the lead, but OG have shown us back to back now. भाई ये मस्त गेम चल रहा है गाइस, मैं बोल रहा हूँ बहुत ब्यूटीफुल गेम है ये. Even they're having to use buybacks for Fnatic. Still in a situation where रिफ्रेशर आ गया, अभी दोनों बार वो रिफ्रेशर उसके लिए यूज करेगा वो. Look at his mana pool. He's immediately queued up 3 mangoes. he's got to get them out. Because he's not going to be able to use both. तो देख मैंगो 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 मैंगो, उसके पास माना ही नहीं है क्योंकि 2 अल्टी मारने का. 2 अल्टी मतलब रिफ्रेशर अल्टी मारने का माना ही नहीं है. एक अल्टी और रिफ्रेश उतना ही होगा, दूसरा अल्टी का माना ही नहीं है उस पे. OG's going to be happy because now all those ults ready to go again. The double black hole, the double ravage, it's there. And they're starting to get more and more damage too. Yuragi, as we mentioned, has gone fully defensive with his build. Finally now started Gonna see them try and lead in on Yuragi. Start things Whoa! off. Oh my god. The EL disc will give some safety for Amel to back off. Yuragi buys back immediately. Tiger stepping forward with the BKB, but not able to find an opportunity to drop a black hole. Out to the side. इस पे डाल देगा वो? नहीं, कि जैब्स मिल गया वो लोग को. नाइस रैवेज. अरे यार वो रुका रहा है यार जॉनवेल. उसको ही डाल दे रहे ब्लैक होल. फक, अनोइंग प्लेयर है रे वो जॉनवेल. एनिग्मा खेलना कितना मुश्किल हो गया अभी, पता है गेम में. The mind games between these two. It really is. John Well's been doing an excellent job of making sure each and every time he has been there to stop it, but we saw in that scenario. क्या पोजीशनिंग ले रहा है वो ट्रिएंट? वो दिखाई नहीं रहा है तब तक, वो दिखाई नहीं रहा है. उसको पता है एक ही काम है उसका, ब्लैक होल रुकाना है. Controlling him. It's going to be up to DJ and Armel to really carry this one in these team fights. The combination, of course, between those two heroes, it is going to be an insane amount of magical burst. DJ still has a flawless game so far. 14-0-2. कितना फैट है रे वो डीजे. 14-0 है वो. डीजे 14-0 है दोस्तों. Oh my god. 14-0. ऑफ लेनर से ज्यादा फार्म है उस पे. He does have what? The 3 buybacks ready. The 2 important ones on cooldown for Fnatic. Armel's is about to come. भाई परसेंट बेस माना बन नहीं होता है. कौन बोला परसेंट बेस माना बने? एम का परसेंट बेस माना नहीं है. क्या बका रहा है? चल मैक्स माना बंट. ओके वैसा नहीं रे, नहीं है काउंटर. कुछ भी हो, वो एंटी मैच उसको क्या मारने थोड़ी मिलने वाला है. मॉर्फलिंग के पास एस्केप स्पेल्स है, वेव फॉर्म है. एंटी मैच को थोड़ी ना वो खड़े खड़े मारने देगा, ऐसे नहीं होता है. और वो क्या ब्रेथ किंग नहीं है कि अल्टी डिपेंडेंट हीरो या ऐसा कुछ है. वो स्ट्रॉन्ग हीरो है, खड़े खड़े मारता है मॉर्फलिंग उसको. वो एंटी मैच को ही कन्वर्ट करके ब्लिंक आउट कर देगा और वेव आउट कर देगा. हाय विपुल, व्हाट्स अप. भाई एनिग्मा खेलना बहुत मुश्किल है, बोल रहा हूँ मैं. ये गेम बहुत ही मुश्किल है. डीजे पहली डेथ हो गई भाई. वो कितना गोल्ड दिया देखो उसने, 1000 गोल्ड प्लस 500. वाओ. Instant buyback though. He really didn't want to give up the chance of maybe OG getting a successful fight and looking towards the Roshan, because Roshan could be up pretty soon. Both teams they need to keep holding. एनिग्मा को जो तो बोल रहा हूँ मैं, वो ट्रिएंट है ना बहुत मस्त खेल रहा है, बट एनिग्मा भी मस्त खेल रहा है. उसको भी पता है कि वो ट्रिएंट रुकाने वाला है, तो ही इज ट्राइंग टू फाइंड डिफरेंट वेज टू प्ले द फाइट. वो बेट करना चाहता है कैसे तो उसकी अल्टी, क्योंकि दोनों के पास रिफ्रेशर है. दोनों को वही है, इसको ब्लैक होल मारने की कोशिश करनी है और उसको ब्लैक होल रुकाने की.
और वो आदमी के पास माना नहीं है, बट ही इज व्हाट ही इज डूइंग इज बाइंग 3 मैंगोज एवरी टाइम, ताकि उसके पास माना रहे 2 अल्टी यूज करने का ट्रिएंट के पास। ब्यूटीफुल गेम है ये। रूट से रुकना तो नहीं चाहिए, बट पता नहीं यार, वो एक जगह पे रूट क्या है, मतलब मुझे भी नहीं लगता है वो वर्थ इट नहीं लगता, मतलब वो अल्टी रूट है इसलिए शायद से रुकता है। Every single fight where he's been able to just sit back and get the black holes off, Fnatic has lost. Really feels like they have to find him. 14 to OG के टोटल किल्स भी नहीं है। हाँ ना यार, जितना उसका ये कोर हुडविंग देखने की इच्छा पूरी हो गई। नहीं रहे हो तो सपोर्ट ही था, बट कोर हो गया अभी, वो इज फैट इनफ। बट देख रहे हो क्या, नेटवर्क उन लोग ने बैलेंस कर दिया। इट्स ओनली 2K लीड नाउ 50 मिनट पे। ब्लैक होल वर्थ इट है, फुल वर्थ इट है भाई ये। नाइस, सीके पे ब्लैक होल, लेट्स गो लेट्स गो। सीके पे ब्लैक होल के दूर है एनिग्मा, करेंगे 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 ब्लैक होल। ओह नो, नहीं नहीं नहीं, बट ठीक है, वर्थ इट था वो। बायबैक हो गया, ये भी मर गया, और एक ब्लैक होल रेडी है, बीके भी रेडी है। इट्स ऑल गुड। क्वालिटी इंक्रीज करूं, वो बीच बीच में अटक रहे, क्वालिटी इंक्रीज करूंगा तो खराब हो जाएगा, पूरा पूरा अटकेगा। देख 1080p की है, हो ही नहीं रहा, हो है 1080p है। No holding back, and indeed, John, well, he's really doing his best to put a stop to these black holes, but at this stage, the damage OG have, be there any sort of seconds of lockdown, दोनों पे प्रेशर है, ट्रिएंट पे भी प्रेशर है और उस पे भी प्रेशर है। पहला रोशन मिल रहा है ओजी को, और सब कुछ मिल रहा है उसके साथ, रिफ्रेशर, सेप्टर, सब कुछ है। ओ अरे नहीं छोड़, एजिस नहीं चुरा है तो भी बाकी बहुत कुछ चुरा सकता था, वो सेप्टर वगैरह चुरा सकता था, समझा क्या? एजिस इज फाइन। सेप्टर किसको दिया वो नहीं समझा मुझे। मॉर्फलिंग को ही दिया क्या? वो स्टैट्स चुराता है आजकल, स्ट्रेंथ रहेगा तो स्टेटस रेजिस्टेंस रहता है और कुछ ऐसा ऐसा रहता है मॉर्फलिंग का। ओके ठीक है, वो ये थोड़ा उसने और बफ करो जन। ओ मॉर्फलिंग को दिया, देख एजिलिटी रहेगा तो अटैक स्पीड चोरी करता है, और इंट रहेगा तो स्पेल एम्प्लीफिकेशन। मोस्टली तो वो सीके बनने वाला है तो उसको स्टेटस रेजिस्टेंस ही मिलेगा। वो सब तो सोचो, अभी थोड़ी देर पहले 12 की लीड हो गया रे, सामने था 12 की लीड। फनेटिक के पास 10 की लीड थी, अभी पूरा उल्टा हो गया। सोचो ये तो बहुत 2-3 साल खेलेंगे। वैसा नहीं होता है भाई, वो नाम मॉर्फलिंग है इनका। ट्रिएंट के रूट पे स्पेल्स नहीं यूज कर सकते अपोनेंट हीरोज, उसके स्किल डिस्क्रिप्शन में है। अरे स्पेल्स नहीं यूज कर सकते बेसिकली है ना, सब रूट से है ना चैनलिंग स्पेल रुकते नहीं है, बहुत कम। ये ट्रिएंट का अल्टी एक अलग एक्सेप्शन है, समझा क्या? ओजी जस्ट हैड टू वेट फॉर द पावर स्पाइक। नहीं रहे वो लोग ओजी वाले तो बहुत ओपी खेले हैं। नॉट गना लाई, फनेटिक भी अच्छा ही खेला है, इतना अच्छा खेला है, और फिर अभी वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ओजी वाले जरा सा ज्यादा स्मार्ट है इसलिए ये है। उधर सेफ बैठा है रे, एक्सपीरियंस मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। उसने बोला रहेगा ये करो वो करो, चुपचाप हाई ग्राउंड डिफेंड करो। क्या खेल रहा है? देयर इज स्टिल वन चांस। हाँ वो तो है, वो तो पहले से ही था रे, मतलब अगर ये गेम ओजी जीत गया तो भाई मैं पागल। ठीक है, मैं रिमाइंडर दूंगा भाई वॉरलॉर्ड तुझे। हाय सिंगम, आयो एकदम इजी विन है। BKB pop, they're still able to get him with the pistol to hold him down. Over to the side, Jabs jumping forward. They try and get the control and burst over towards Jiragi. Oh, BKB waste हुआ पहला. Jiragi's fine. Taiga can also freely pop BKB. They try to go for him, but he just BKBs and he's still got another two of them afterwards. The tier 2 taken OG. They
They can certainly keep this push going. No reason to back off while Shiragi's got this Aegis. युरागी के लिए बहुत बुरा लगा, बट स्टार्टिंग में एक लेवल को वो लोग ने बहुत मस्त मारा, फिर दूसरे तो वो लेन में भी क्या मारा, फिर उसने जाके टीपी करके मारा, बहुत गंदा स्टार्ट था उसके लिए। ब्लैक होल, ओह नो, रुका दिया उसने। अभी तक और एक रिफ्रेशर है उस पे, एनिग्मा पे। मर गया युरागी, बट एजी से ठीक है। केओटीएल को जो भर रहे ना, बराबर है, मॉन्टी बराबर बोल रहे हैं। केओटीएल को पहले जो उड़ा रहे ना, टीम फाइट ही खत्म हो रहा है वो लोग का। डैमेज वही था। एक किधर गया वो? ए पैंगो गेम के बाहर गया। नहीं 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 निकला, वही तो बोल रहा हूँ, उधर पहले फंसा था वो, गेम के बाहर चला गया, मुझे लगा हो गया बग। ऐसे बग में कुछ नहीं कर सकते। ओजी का टीम फाइट बेटर है, 2 ब्लैक होल 2 एवरेज नहीं रे, वैसे नहीं, गेम में पीछे रहेगा तो काय का टीम फाइट रे, वो लोग ने बहुत मस्त खेला। ओ सोलो किल की कोशिश थी ये, ब्लैक होल डाल दिया भाई सोलो। बट वो देखा क्या उसने, ब्लैक होल रुकाया नहीं। ट्रिएंट इज सो स्मार्ट, उसने ये वाला ब्लैक होल रुकाया नहीं, क्योंकि वो रुका के फायदा नहीं था, हुडविंग था। उसने रखा है अभी तक अल्टी, और उसको पता है इसके पास और एक रिफ्रेशर है एनिग्मा के पास, मतलब और एक है अल्टी। भाई लोग दिख नहीं रहे, हेलो लोग कम लग रहे हैं अपने किधर? डिस्कॉर्ड खाली नहीं होता अभी। हाँ ना, नहीं मतलब दोपहर को डिस्कॉर्ड पे आते लोग, रात को नहीं आते डिस्कॉर्ड में, मैंने नोटिस किया है। नहीं नहीं रात को नहीं आते कोई ज्यादा डिस्कॉर्ड पे, दोपहर को आते। आज मेरा नेट बहुत खराब था रे दोपहर को। हम दोपहर को देखा था तो ऑनलाइन नहीं था। मेरे 500 पिंग आ रहा था एससीए पे, इंडिया पे भी। दो रैवेज आ गया। ओ भाई, ओ माय गॉड, देखना तो क्या होता है। His TP, I believe, was on cooldown too, so couldn't actually rejoin in. अच्छा हो गया, वो नहीं होना This is why you get the Dagons coming out. Armel चाहिए। knowing exactly what needs to be done to punish your ओ जी, ओ जी, खिलाड़ी ओ जी। अरे क्या अटक गया, सैड यार। आपको करना पड़ा है, वो से अटका। अरे यार ये क्या अटका है यार, गलत टाइमिंग पे अटका है दोस्तों। की ट्विच खोल दो जल्दी। अरे फक रे, क्या ये तो, ये क्या, ये गेम में अटका है पता है। ओ मुझे समझा वो क्यों अटका। क्यों? ओजी जीत गए और वो स्विच हो गया, जैसे ही ओजी का गेम खत्म हो गया वो स्विच हो गया नेक्स्ट वाले इस पे। तो मैं गेमिंग ग्लैडिएटर पे देख रहा हूँ अभी, पता है गेमिंग ग्लैडिएटर वाले टैब पे देख रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ वो ये था ये बग। कितने मिनट है आपके यहाँ पे? ये इधर 2 मिनट पीछे रहता है। पीछे तो भी 60 मिनट पे चालू है ये। 62 मिनट पे खत्म होने वाला है शायद से गेम, देखना तो। ये 2 मिनट में ऐसा कुछ तो खतरनाक फाइट होने वाला है ना।
Yeah, it's going to be even चालू harder ही for हो sort रहा है फाइट. of John Well to find Fallen out Sky, if he can get 60 round minutes to the items. Well, Peter Hex onto Fallen the Sky Jabs, मिला will be अभी. forced to हाँ, BKB. that's true. It's a bit of a dangerous spot here. Okay, he's got the remnant at the ready. Jabs Yeah, Fallen Sky. poking at OG in a Tide को मिला है. position, but he'll get away with it. हाँ, टाइड नहीं लिया Where did they अरे put the Spear Stone? भाई. Morphling's carrying it. Okay. ये गजब आइटम है Fallen Sky. भाई बहुत ओपी आइटम है, मेरे को पसंद है वो आइटम. इनिशिएट करने के लिए बेस्ट है OG, ये. of course, keeping वो every वो lane आपके पास pushed in इनिशिएट towards the base. बहुत ओपी है. AOE स्टन देता है रे. अरे स्पॉइलर नहीं दे रहा ब्रो, वो बग है गेम का. Lens and Seer Stone for cast On Mirror range. Shield. And now they're fine. Mirror Shield too. That can be very 2 मिनट का डिले नहीं रहेगा, फिर 4-5 मिनट का डिले रहेगा स्ट्रीम टू गेम. Huge part in potentially being the counter to the way that Fnatic have been getting these kills. We'll see who's going to hold it. It's got to be Uragi. Yeah, I was going to say, they've got to get it on the morph, really. एजिस यूरागो को ही देना पड़ेगा रे, बायबैक किया है वो. Acquiring farm ये also. रोशन नहीं जा रहे वो लोग. Hero now too. There we go. नहीं करना है. Indeed, that Mirror टाइड Shield देखना किधर really बैठा है. messed with the way that Fnatic's been able to take down morph. फॉलन स्काई Okay, लेके. the Ex Machina, they might want to switch things. They got एक ओए भाई उसके पास Jet and Fnatic. ये आइटम रिफ्रेश करने वाला ये आ गया. इसको देना चाहिए जकीरो को. Roche, another अरे Aghanim, भाई वो another 15 refresher. लेवल की उसकी आइटम है. Gives एक्स मशीना. बात ही मत करो. एक्स मकीना मतलब आपके पास ऑफरेट और और ऊपर से एक्स. हाँ पैंगो को देंगे वो. नहीं रे, जो आइटम रिफ्रेश करता है वो स्पेल्स रिफ्रेश नहीं करता है वो. Okay, हाँ they give it आइटम to रिफ्रेश Tiger. करते हैं पर इमेजिन कि यू Fine. हैव More योंडर. sensible. हाँ ना, एओनडी से रिफ्रेश करता है वो. Instead of 180 every 20 seconds you can use योंडर. Yes, 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 yes. वो गेम जीता ही है भाई उस आइटम में बहुत बार. नहीं अपने गेम उतने चलते ही नहीं है. But Fnatic, they do this time round, bait out some of this attempt from OG But- to hit the jump, and they won't lose anything it's themselves too with much the for Fnatic, team so गधे they जैसी won't होती have है to तो worry about those जीते rounds जाते at हैं. a time. Uragi finds himself a ओजी के लिए इज्जत बढ़ गया बट फनाटिक 100% विन प्रोबेबिलिटी है. ये क्या बकाया. 100% win probability for OG. It really does feel like that. too. फील्स All these बैड players मैन. have ये all इसको ही been दिखा रहे कब से, ये रो रहा है. I believe they gave him the फनाटिक हार रहे तो. start. Yes, they did. Yeah, pretty much popped it immediately. Amar making sure he has the Ravage here for the push. Might catch Fnatic by surprise if they didn't see that refresher shot being passed over to him. Fnatic need a blessing somehow. लिक्विड वीडियो पे तो नहीं आया है लाइव. Ragi, just gonna get in with the BKB DD. उसको ये भी मिला है भाई, एपेक्स. Rolling in towards the backlines. He's got the setup with the Gladiators going straight over towards DJ, locking him down with the Abyss. Morphling. Make sure he can get back to base. फोर्स बुट्स लिया इसने. Distance away from BZM, but the barracks being focused down by the illusions. And the rest getting Oh! Mars in, he's ready to go with the full skies. Oh my god, मुझे लगा रैवेज मार देगा वो. But Fnatic, they can't keep their racks alive. OG, they'll clean up the final set of racks. बेचारे देखना फनाटिक फैंस. बेचारा रे. And Fnatic trying to commit. तीसरे रैक्स पे उसको बहुत दुखा बेचारे को. They'll look to force Armel onto the side. They're trying to get Armel back to safety, but BZM rolls in with the thunder, the glide near. They've caught Armel. Armel falls GG. down to the game. बायबैक नहीं है उस पे. Over towards DJ as well. के डीजे नो बायबैक. Buyback set. पीके अंदर नहीं कर Got सकते. himself John Well as well. The tree and ice pass down. OG, they get a third triple kill for Uragi. 3 यूरो नो बायबैक. इजी ओवर. 5 मिनट का डिले था. Cooldown at the moment. 45 वो तो seconds सब until ठीक है. ये Armel टाइड returns ने to क्या the मस्त fight. यूज किया अभी. भाई मस्त चीज क्या उसने 2 हीरो पे ये डाला फॉलन्स का. ये देख अभी भी. ओ माय गॉड. Raven and Jabs. और उसको कुछ कास्ट टाइम नहीं है रे. बहुत खतरनाक है वो. He gets the jump onto जी जी गाइस. Basically वो तुम इनविजिबल हो जाते हो उतने टाइम के लिए टेक्निकली. Right? Because you are technically out of the map. Oh, and Amar with some No one can हाँ हाँ pass वो that. इनवल्नरेबल होता है उसमें. PasoLL, bro, right next time. क्या खुशी मिलती रहेगी रे ऐसा गेम खेलने के बाद. सोचो ना भाई मस्त खेला है. भाई टाइगर लिया था मैंने. BGM था अपना. चेक करेंगे अभी थोड़ी देर में. Fnatic was literally playing ये the game गेम perfectly, जीता है. ये getting गेम the जीता है split वो up, लोग. always getting the pick up. भाई किधर से कमबैक किया रे ओजी ने वो गेम. किधर से कमबैक किया किधर से. Keeping that goal. फनाटिक हैज 1 OP हीरो बट ओजी हैज 3 लेट गेम OP हीरोज. ओजी अच्छा खेले बट फनाटिक भी अच्छा ही खेल रहे थे. फनाटिक ने उतना गंदा नहीं खेला. क्या फोड़ा है ओजी ऐसे टीम को अर्ली. Go for team fight to cancel it with the refresher and stuff on Janwell, but over and over again पूरा they were लग getting रहा on है Raven अभी. too. फाइट के लिए. इसके लिए सबसे ज्यादा टेंशन था पता है. अरे 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 फैड बॉयज डीजे डीजे. Oh no. One of the best showings he's had here at the major so far. Only dying 3 times that game as well on the tide. डीजे के लिए कितना बुरा लगता रहेगा. सोचो ना कितना मारा है उसने गेम में. उसका 14-15 किल था रे गेम में. But it was enough.
for OG to set up for these turnaround team fights. Thunder The Fnatic versus started to OG. fall apart in. There's nothing better than looking at these type of games इतनी where you दो just have the TVD perseverance कैसे हो that सकती who है cares about the गेमिंग kill score? ग्लैडिएटर्स They और understand what their बीस्कोस्ट की lineup एक is ही able गेम to बाकी है do in राइट? those later stages, and they नहीं रे, executed तो वो perfectly. पहले वाला ब्रैकेट चल रहा है अभी तक. Really been treated to some excellent Dota 2 here अभी today. Unfortunately for देख Fnatic, जो मैच है ना ये ओजी वर्सेस थंडर अवेकन और गेमिंग ग्लैडिएटर वर्सेस बीस्कोस एक ही है, एक ही लाइन में. they'll take this series 2-1. ओके लोअर ब्रैकेट क्वार्टर फाइनल्स है वो बेसिकली. ओल्ड फैशन ओजी कमबैक, यस भाई मजा आ गया ये देखने में. कमबैक मींस ओजी, यस चैट. भाई ओजी ब्यूटीफुल टीम है. थ्रोइंग नहीं रे, थ्रो नहीं किया है फनाटिक ने, वो क्लोज नहीं कर पाए मैप. थ्रो नहीं बोलते उसको, तो गलती उसकी है. जैप्स की सबसे बड़ी गलती, वो टॉप पे पकड़ा गया था याद है. उधर से सब कुछ डाउनफॉल चालू हो गया फनाटिक का, आई मीन इसका ओजी का. ओके गाइस, मैं अभी बता दूं कि तुम लोगों ने टाइटल पढ़ा ही रहेगा. 24 आवर्स रिमेनिंग. जस्ट अ रिमाइंडर, लास्ट 24 आवर्स रिमेनिंग गाइस. कल हम लोग का गिव अवे होने वाला है. 1 लकी मेंबर कल जीतने वाला है एक HyperX सोलो कास्ट. सो अभी आज का लास्ट दिन रहेगा. किसी को मेंबर बनना है तो बन सकते हो, नहीं बनना है तो इट्स फाइन. तुम लोग के लिए भी कुछ और रहेगा, वो भी एक अनाउंसमेंट है. नॉन मेंबर्स डोंट वरी, आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस एज वेल. हम लोग ने अभी तक क्विज करते थे. लास्ट 2 गिव अवे में हम लोग ने क्विज किया था डोटा का. कल कुछ तो और करने वाले हैं. मतलब वो आइडिया मेरे से पहले दिमाग में था, बट मैंने अभी रिसेंटली मेजर में देखा कि वो लोग वो गेम खेल रहे थे प्लेयर्स के साथ, ESL वाले. तो मैं बोला व्हाई नॉट जस्ट डू इट टुमारो इटसेल्फ. तो आज मैंने पूरा प्रिपरेशन किया है. जस्ट मैं तुम लोग को हिंट दूंगा. हिंट ये रहेगा, रुको मेरी बात सुनो पहले. हिंट ये दूंगा तुम लोग को कि दोस्तों जो हीरोज है गेम में, उनका सारा आइटम्स और हीरो का लोड आउट आइटम ये सब देख लो. पता नहीं कल को क्या कभी आ सकता है तुम लोग को वो गेम में काम. जस्ट बोल रहा हूं कि मेक श्योर तुम लोग ये सब चेक कर चुके हो. ये मतलब हर एक हीरो का ऐसा एक बार नजर डाल दो, आइटम कौन सा किसके पास क्या है, समझा. तुम लोग को कल जरूरत पड़ सकती है ये चीज की. एंड यू गाइज हैव अ चांस टू विन समथिंग टुमारो. तो ये सब देख के रखो, पहले ही बोल रहा हूं कल काम में आ सकता है ये चीज. ओके, सारा सब कुछ देख के आओ एक बार. सब कुछ देख के आओ बोल रहा हूं मैं. कभी भी कुछ भी आ सकता है कल के दिन. ऐसा पूरे हीरोज का सब कुछ देख के आओ, मैं बोल रहा हूं. टुमारो यू गाइज हैव समथिंग टू प्ले फॉर. कल मजा आने वाला है दोस्तों, देखना. मैं बोल रहा हूं बी प्रिपेयर्ड. कल को कुछ भी कभी भी कुछ भी आ सकता है. और जिसको हीरोज कैसे दिखते, क्या कैसे किसका क्या रहता है वो पता रहेगा, उसको कुछ जीतने मिलेगा. तो थोड़ा सा एक बार नजर डाल दो पूरे गेम के हीरोज पे एक बार. चाहिए तो ऐसा अबड़न से चालू करो. ए मतलब अबड़न से चालू होता है. ऐसा 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 एक एक करके आगे जाओ और देखते जाओ. ऐसे तुम लोग को ये भी देखना पड़ेगा, पहले बोल रहा हूँ ये भी देखना पड़ेगा. तो ये सब करते जाओ, तुम लोग को कल कुछ जीतने का चांस है. नॉन मेंबर्स और मेंबर्स मतलब सबके लिए ये वाला सबके लिए रहेगा. और जो मेन गिव अवे है जिसमें हम लोग एक माइक दे रहे हैं HyperX का कंडेंसर माइक, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा. बाकी जो दूसरा गेम रहेगा, ये जो मैं अभी तुम लोग को हिंट दे रहा हूं, सुन रहे हो, जो हिंट दे रहा हूं वो तुम लोग को वो पहले वाले गेम में आएगा. जो गिव अवे करेंगे उसके पहले हम लोग का एक ट्रेडिशन है, पता है तुम लोग को, जो पहले से देखते हैं. वो गिव अवे के पहले हम लोग एक गेम करते हैं सबके लिए. गेम मतलब कॉन्टेस्ट रहता है बेसिकली, फ्री फॉर ऑल. तो वो कॉन्टेस्ट में तुम लोग को चांस है. और एक हिंट दूंगा, ये कॉन्टेस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा. आंसर जिसका आंसर पहले सही आएगा उसको ही मिलने वाला है. पहले बोल रहा हूं, मेरा नेट खराब है पासोल भाई, मेरे पीसी में मेरा पहले था, ये सब नहीं चलने वाला है. मैं ऐसे है ना तुम लोग को बता दूं, स्क्रीन पे ना चैट बॉक्स डालने वाला हूं. वेट, लेट मी शो यू गाइस.
ये दिख रहा है, ऐसा चैट बॉक्स आने वाला है स्क्रीन पे, ऐसा चैट बॉक्स आएगा। वो चैट बॉक्स में तुम लोग क्या बोलते हैं, वापस कंफर्म कर सकते हो कि तुम लोग का नाम है क्या, किसका नाम है पहला। तो मैं बोल रहा हूँ, नेट मेरा स्लो है, मेरा ये मेरे पीसी में मेरा नाम पहले था, वो सब कल चलने नहीं वाला है, पहले बोल रहा हूँ। कल के कॉन्टेस्ट में बी रेडी, अच्छा नेट लेके आओ, अच्छा सब कुछ करके आओ, और बस उतना ही, प्रिपेयर करके आओ। कल रीजंस नहीं चाहिए मुझे, प्रिपरेशन तुम लोग का ये है, ये सारे हीरोज एक बार देखना पड़ेगा विद देयर कॉस्मेटिक्स। ओके, बी रेडी। ये आज का हिंट है और आज का अनाउंसमेंट ये था। बाकी लास्ट डे है गिव अवे का, तो जो भी मेंबर्स है दे हैव अ चांस टू विन वन HyperX क्लाउड नहीं, HyperX सोलो कास्ट माइक टुमारो। अभी मैं जरा चैट पढ़ता हूँ, चैट नहीं पढ़ा। मेंबरशिप गिव अवे नहीं है माय ब्रो, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ पता है। पहले तो मैं ना ये सबसे महंगा चीज दे रहा हूँ, अभी जितने भी मैंने गिव अवे किए ना प्री, उसमें से ये सबसे एक्सपेंसिव आइटम है। अभी तक देखा जाए तो हम लोग ने अराउंड 10,000 का दिया था पहले, प्लस ये कुछ तो 7,000 का माइक है ये। तो आउट ऑफ द 25,000 वी हैव प्रॉमिस्ड 17,000 का तो गिव अवे हो चुका है। बचे कितने, 17 प्लस 8 राइट, 25, हाँ 8,000 का ओवर द टाइम करेंगे, बट ज़्यादा ही करेंगे, डोंट वरी, देखते हैं। तो ये है अनाउंसमेंट कि कल गिव अवे भी होगा, और उसके पहले कुछ कॉन्टेस्ट भी होगा, डोटा रिलेटेड, हीरोज रिलेटेड। तो बी प्रिपेयर्ड, हीरोज देख के आना, सब कुछ पढ़ाई करके आना, क्या पता है तुम लोगों को कुछ अच्छा कुछ मिल जाए कल को। बैंड डॉमी भाई वो सब नहीं, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। कल का नेट वगैरह अच्छा देख लो। मेरे पीसी में मेरा नाम पहले था, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे पीसी में तुम लोग एंटर भी करोगे तो वो डिलीवर होने टाइम लगता है, समझ लो। अगर तुम्हारा नेट स्लो होगा तो तेरे पीसी में एंटर तो होगा वो, बट डिलीवर नहीं होगा आगे, समझ रहे हो। चैट पे गेट गुड नेट और डू होमवर्क कल के लिए, ये दो मेन चीजें है। ओजी का मैच रहेगा तो वॉचिंग रहता ही है भाई। हाय मिहिर, व्हाट्स अप ब्रो। हिंट तो इतनी ही है, बाकी तो कल रहेगा कॉन्टेस्ट रिवील कल रहेगा, फिर गिव अवे भी कल रहेगा, दोनों एक साथ रहेगा। उसके बाद टाइम मिला तो हम लोग लॉबी करेंगे। ओके, टाइम तो मिलेगा क्योंकि ये फटाफट हो जाता है, 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है पूरा अपना कंटेंट। अरे हाँ, इंटरव्यू देखना चाहिए था। क्या बोल रहे थे, रो रहे थे ना बेचारे फनाटिक वाला, डीजे रो रहा था, बुरा लगा मुझे। चल रहा है, रुक। And last but certainly not least, BZM, a man of few words. You got a little something extra you can give to the crowd for after such an amazing game? Let us Enigma the whole tournament, please, for more games like this. Thank you. All right, everyone else, you've got Draft Intelligence, BZM from the horse's mouth, and all of you in Stockholm, I hope you enjoyed that game. Congratulations to OG. Yeah, we enjoyed that game and then some. I mean, we're going to try to break it down, but at some point, Quinn, a game like that, can you really analyze the madness? Yeah, But there's so मैं many आपका आवाज moments नहीं throughout that है। game. I think it's really easy to look at दो OG and मिनट say, रुक। wow, what an amazing comeback. But I also think there are props due to Fnatic, especially DJ, for at some point in the game he was like 14-0 and 14. I think a lot of players on the team played extremely well, and sometimes, I don't know, games they just go haywire, they go crazy like this. And like you said, it's hard to decipher what the heck is actually happening. I mean, I feel like this is the perfect example of why Dota is such a beautiful game, because the team that's behind on kills for best portion, still able to keep up the fight, still able to, you know, keep in it, and then eventually you turn the tide. You know, other games, not naming names, that would be over in 20 minutes. So like, we actually got an hour-long game out of it. So, you know, it's just amazing.
It has been an amazing game. We got a couple of clips. There were a lot of fights in that. We got a couple of clips to relive some of the hyper moments. But the start of the game all went the way of Fnatic. It wasn't even close, Purge. Yeah, Arma was so far ahead. He got first blood before the runes even. रुको जरा पॉइंट्स देखते हैं गाइस फैंटेसी का, अभी वो तो बाद में देख ही सकते हैं हम लोग. 32 मिला है, ठीक है, नॉट बैड. BGM 32 इज फाइन. 30 प्लस है ना, आई एम हैप्पी गाइस. अभी मेरे 3 प्लेयर्स ने 104 स्कोर किया है, 2 प्लेयर्स बाकी है. लेट्स सी कौन क्या करता है. आपने ओजी का मैच हाँ देखा ना, हम लोग ने सब लोग ने मिलके देखा. हाय कॉमन मैन. गिव अवे का गाइडलाइंस ये है कि ये चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा. वो मतलब कोई भी मेंबर ले लो, मेंबरशिप ले लो तुम लोग पे, और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए. बाहर के रेसिडेंट के लिए नहीं है ये, इट्स ओनली फॉर इंडियन रेसिडेंट्स. ये मेन गिव अवे जिसमें एक विनर को, एक मेंबर को बेसिकली HyperX सोलो कास्ट माइक मिलेगा. ये दिख रहा है इधर, ओके. और बाकी सबके लिए कॉन्टेस्ट होगा जो जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा, बट यू हैव समथिंग टू विन. नॉट अ प्रोडक्ट बट समथिंग. कल का रोस्टर्स नहीं अभी तक पता नहीं है क्या सेट करना चाहिए. कुछ तो रफली कर लिया है बट मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर. 45 यस. वाओ, अच्छा है. मैंने टाइगर 36. वाओ भाई, बहुत मस्त स्कोर किया तेरे लोग. अभी सैलरी बाकी है, 0 पे है अभी तो. हाँ मेरा भी सैलरी और डिराचियो बाकी है. मेरा K1 43.91 किया है. ये बैटबूम में डहाक की जगह सामने वाली टीम ले लिया होती ना तो बहुत मस्त स्कोर हो जाता. हाँ मैंने K1 लिया था. ए रुक जरा, मैं चैट से बात कर रहा हूँ ब्रो, चिल कर जरा. हाय देवेंद्र, व्हाट्स अप. स्क्रिबल नहीं है, मैं मार खेलूंगा. सारे हीरोज का लोर मैंने नहीं पढ़ा है कभी, लोर वगैरह. ये बंद कर रहा हूँ मैं, बाद में देखूंगा. भाई मॉन्टी पीछे जाना है, उसमें तो बहुत लिमिटेड है पीछे जाने के लिए, पूरा नहीं जा सकते इसमें पीछे. ये थोड़ा सा ही जा सकते हैं जितना लोड होता है अभी. हाय अक्षित. 3 players 111 स्कोर. नाइस, गुड स्कोर एक्चुअली. 3 प्लेयर में ना 100 प्लस इज वेरी गुड स्कोर. गुड मतलब डिसेंट एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि ये लोग ने अगर 40 स्कोर किया तो बहुत अच्छा रहता है. ये लोग ने 30 स्कोर किया तो इधर आता है टॉप 25% में. 180 या 190 मतलब ये रहता है. अभी कल मैंने 178 स्कोर किया था, 89% ही हुआ मेरा. टॉप 20 में नहीं आया, मैं टॉप 10 में नहीं आया. 180 प्लस होना चाहिए मुझे लगता है. 180 प्लस इज टॉप 10%. भाई बहुत मस्त है, बहुत मस्त गेम है. मीर देखना चाहिए तुझे. कल का क्या मैचेस है मैं श्योर नहीं हूं, 2 मिनट रुकना. थंडर प्रेडेटर, ओजी, टुंड्रा, TSM. ओ ब्यूटीफुल गेम्स है कल. ओके ये है मेरा कल का. थंडर प्रेडेटर, ओजी और ये लोग का टुंड्रा वर्सेस TSM. कल है ओजी का मैच नेक्स्ट. फैंटेसी के ट्रेजर में ये क्या दिखाया है ना, ये देख. गाइस मैं तो बोलूंगा ये ट्रेजर भी देख के आना कल, बोल रहा हूं मैं. चलो हम लोग MMR खेलते हैं गाइस थोड़ा. लेट्स प्ले सम MMR गाइस. फाइंड कर रहा हूं मैं. SF का 500 रुपए का सेट है, 535.
कल 4 नहीं होंगे ब्रो, बहुत ज़्यादा है, 3-3 है डेली, डेली 3-3 है, एवरी डे 3 गेम्स और लास्ट डे पे 2 गेम्स है क्योंकि लास्ट वाला BO5 रहेगा। थंडर प्रेडेटर वर्सेस ओजी और ये ना जी ग्लेमिंग ग्लैडिएटर और बीस्कोस का विनर इनके विनर से खेलेगा, ओजी थंडर प्रेडेटर के विनर से, और फिर वो दोनों का विनर इधर, ये दोनों वो उधर खेलेंगे इधर, और ये दोनों का विनर इनके लूजर से खेलेगा, टुंड्रा वर्सेस TSM। हाय आकाश, प्ले सपोर्ट दैट यू हैवंट प्लेड मच। नो ब्रो, राइट नाउ मेरा MMR का फेज अच्छा चल रहा है, आई एम गोइंग टू स्पैम हीरोज विथ विच आई एम गेटिंग MMR। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी न्यू हीरो, सॉरी ब्रो। ये सेम SF का सेट जो सिल्वर कलर में है बहुत एक्सपेंसिव है, दिस वन इज सेम। हाँ वही है शायद से, वो लोग ने वही है रे, पुराने सेट ही वो लोग ने थोड़े से ये किए। हाँ यही है, इटर्नल हार्वेस्ट, इसका भी नाम इटर्नल हार्वेस्ट है। हाँ स्प्रिंग लीनियज ऑफ इटर्नल हार्वेस्ट, वही है वो। ये पता नहीं इतना महंगा क्यों है। किस में मिलता है वो नहीं दिख रहा है, बट पैसा दिख रहा है इधर बस। मिलता किस में है वो पता नहीं, छोड़ो। आई हैव टू स्टडी नाउ, आई थॉट आई वाज गोना बी इन अ गुड शेप फॉर टुमारो। स्टडी करना पड़ेगा भाई, कल का कॉन्टेस्ट है अपना। युवरागी 45 पॉइंट्स, BGM 36, टाइगर 37। भाई नाइस, मेरा कम दिया फिर, BGM 32 ही दिया मुझे क्योंकि उस पर फर्स्ट ब्लड है और रून्स ग्रैब्ड और किल्स है। कार्ड अच्छा नहीं है सच कहूँ तो। फनाटिक बेचारे बाहर गए रे, बट अच्छा खेले ओवरऑल फनाटिक टूर्नामेंट है। फनाटिक बाहर गया, और कौन बाहर गया आज? ये लोग बाहर गए ना, डहाक वाला टीम। सैलरी ऑब्स प्लांटेड है यार, कितना लेट मिला है रे। शी अभी डालना था, अभी ये हो गया। हाय चिराग, क्या बोल रहे पिंक बुराना? सेल नहीं करूंगा, पर देखते हैं, ऐसे ही रखूंगा कचरे में पड़ के। अगर कुछ वैल्यू कभी लाइफ में बढ़ गया तो सेल करूंगा, क्योंकि ये यूनिक वाले है ना, कलर अलग है इसमें, तो कुछ भी हो सकता है कभी आगे जाके। और ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड एडिशन वाले बाद में महंगे होते ही है, याद रखना कभी भी। ये DPC वाला ही है सिर्फ, पहले वाले DPC का मैंने रखा है, अगर तुम लोग नोटिस किया रहेगा तो। पहले वाले DPC में उतना कुछ चेंज नहीं किया, बट बहुत फक्कल है, बट कैप रख दिया है मैंने ऐसे ही, क्या पता कल को कुछ हो जाए। क्या पता ये बटरफ्लाई फेमस हो जाए कल को। और ये भी रखे है गोल्डन। हाय कोई तावत सब। नहीं मैं नहीं ओपन करता हूँ, मेरे को जब तक वो अंदर का कुछ अच्छा नहीं लगता है तब तक मैंने ओपन नहीं करता हूँ, जरूरत नहीं है। सैलरी गोल्ड है मेरे, ऑब्स प्लांट का है, कम पॉइंट्स देता है क्योंकि उसका टोफू प्लांट करता है ना, टोफू प्लांट करता है। यो मॉन्टी वेलकम बैक ब्रो। भाई मॉन्टी भाई आ गए। भाई तुम लोग को पता नहीं है ना, चैट में आजकल नए लोग रहते हैं ना गाइस, तुम लोग को एक चीज बता दूं, ये गौतम झा है ना, गौतम झा उसका और एक नाम है मॉन्टी, वो अपने सारे वीडियोस जो डालता हूं ना मैं, शॉर्ट्स फॉर्मेट या जो भी वीडियोस डालता हूं मैं, नए एडिटेड वीडियोस जो भी रहते हैं, वो एडिट अपना गौतम करता है, पता है। तुम लोग ने अगर वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन कभी पढ़ा रहेगा तो तुम लोग नोटिस किए रहोगे कि उसमें लिखा है मैंने कि वीडियोस एडिटेड बाय
मॉन्टी। अभी तक कितने 20-30 से ज़्यादा किया रहेगा, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, ज़्यादा भी हो सकता है, बट उसने किया है 20-30 कुछ तो। इनका गिव अवे कर दो। नहीं रे, मुझे ना ये तुम लोग को सच बताओ क्या दोस्तों, ये मुझे वैल्यू नहीं लगता है। आर्काना गिव अवे या इन गेम आइटम गिव अवे या कुछ ओपी है क्या बोलते हैं, महंगा वाला आइटम गिव अवे, ऐसा ये सब गिव अवे, मुझे ये वैल्यू नहीं लगता है, सच कहूँ तो यूजलेस लगता है मुझे ये। इसलिए मैं ना स्पेशली ये गेमिंग प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, ताकि आदमी को याद भी रहे रे गिव अवे जीतने के बाद कि मैंने कुछ जीता था पसल से, और वो लॉन्ग टर्म रहेगा। ये आर्काना क्या है, कभी हीरो नर्फ हो गया वो नहीं यूज करेंगे, कभी किधर बैटिंग में लगा दिया, क्या क्या नहीं रहता है आर्काना का। इसलिए मैं कभी वो सब नहीं दूंगा इन गेम आइटम्स, मतलब हाँ कभी तो दे दूंगा, बट मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा आइटम्स ओवर, आई मीन रियल आइटम्स ओवर इन गेम आइटम्स। 5 seconds remaining. Ten seconds remaining. टेकीज खेलना है दोस्तों मुझे, सच कहूँ तो। स्टॉन्ग्स के लिए मैं भी रुका हूँ। हे हाय आनंद अभिषेक, अरे मैं इसको भूल गया ये कॉल पे पार्थ। ओ शिट, मैं भूल गया दोस्त, मैं गेम चालू कर दिया है, मैं छोड़ रहा हूँ कॉल। पार्थ है क्या? पार्थ को बोलना ही भूल गया मैं। हेलो पार्थ। पार्थ एफ के चला गया, मुझे लगता है स्ट्रीम पे सुन लेगा वो। बीस्टकोस्ट जी देखेंगे, एक गेम खेलूंगा फिर देखेंगे। इतने जल्दी नहीं होगा वो चालू, ड्राफ्ट होगा, स्लो होगा थोड़ा, फिर देखेंगे हम लोग चिल करके, नॉट इन अ हरी। गेम देखा ना भाई, मस्त था वो। भाई क्या लिख रहा है सौरभ, मैंने अभी ठीक से पढ़ा। मैं तो कितना हार गया है बैटिंग पे आर्काना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कभी बैटिंग नहीं करना है। ऑफलाइन बैट राइडर अगेंस्ट द टीए, लेट्स गो। एक मिनट, सपोर्ट कौन है सामने, कोर कौन है? व्हाट आर देयर पिक्स गाइस, ये क्या है? हाय विग्नेश, व्हाट्स अप मैन, हाउ आर यू? मैंने एक बार 13 आर्काना हारा हूं। ओ माय गॉड, सिंगल बेट पे। मैं बोल रहा हूँ ये सबसे दूर रहो दोस्तों, मुझे पता ही है ये क्या होता है आर्काना वगैरह गिफ्ट करने के बाद, इसलिए बोल रहा हूँ। I'm Squee. I'm Spleen. I'm Spoon. I'm Squeen, I'm Spoon, I'm Spleen. Let's go. Yes. My choice of air. Prepare This for one battle. is in the bag. This one is in the back. This one is in the bag. But the fuses are in there. Go. Everywhere. हाई स्लो हैंड। नहीं रे, नया पैच नहीं आता इतने जल्दी थोड़ी आएगा, अभी तक मेजर चल रहा है, मेजर के बीच में नहीं आएगा नया पैच। टेकीज क्या मस्त आवाज करता है रे। That way. Hope this works. 30 seconds to battle. Excuse me.
honored. You sure? Quit arguing. Let's go. The battle begins. Measurements made. Bombs built. Powder's dry. Okay, let's blow something up. वो वॉर तो डिवॉर्ड होने वाला है पहले. ए इन्वोकर पोजीशन 5 है. Let's go. Hey bad, do you want anything? बहुत लंबा है, उतना नहीं लुक सकता मैं. देखा मैंने उसको. Here goes nothing. Huh? What? Dinner. Come on. Oh boy. कर दिया रे उसने भी ब्लॉक सैडली. We're going, we're going. Jeez. Hope this works. ओ भाई oh no. Excuse us. ओ नो, हवे में उड़ा दिया उसने. सैड. छी 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 छी. कैसा हीरो रे फालतू. Off we go. You sure? Quit arguing. Woohoo! मस्ती नहीं कर सकता. उसके पास रीजन है रे बाय डिफॉल्ट. क्या फालतू है, उसको मैं हरास भी नहीं कर पा रहा हूँ. हाय तुषार, व्हाट्स अप. 24 hours for the giveaway bro. Come here. Off we go. चढ़ेंगे अभी मेरे पे वो. मेरा एचपी लो है तो. Yes. भाई ये तो चीटर है.
चीटर है वो. Radiant's courier has been killed. वो जैसे स्पैम कर रहे हैं ना, चीटिंग लग रहा है मुझे वो. पुल तो नहीं होगा, स्टैक कर रहा हूँ. वो टाइमिंग पे मार रहा है वो स्पेल्स. My mind is exploding with ideas. Literally, I hope. Oh, no. गेम हो गया. चेक करूंगा अवॉर्डेड है क्या. सेंट्री है मेरे पास. Well, that was interesting. नहीं अवॉर्डेड. Radiant structures are fortified. What was that? Let's go. Yes. Just for you. Whee! Woo! You sure? Quit arguing. Off we go! अरे रे डूब दिया. डुबा दिया उसने. बहुत घटिया खेला उसने. एम्बर ने. एम्बर क्या बोल रहा है इसने. मटके में डॉज हो गया रे. मटका गेमिंग. गो. Off we go. So ओह शिट. क्लोज. पर ठीक है, रप्चर डाल दिया उसने. क्लोज था वो. क्लोज एकदम लास्ट सेकंड पे लगा वो. रप्चर डाला उसने. इट्स फाइन मेरे लिए. हाईवी की EMP में माना बन का सेंटर से 2 मिनट रुक. डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता है ना. हाँ सेम अमाउंट बर्न होता है. ऐसा कुछ नहीं कि जितना नज़दीक उतना ज़्यादा. सेम अमाउंट होता है. वो खाया तो सेम अमाउंट बर्न होना ही है. कुछ लेना देना नहीं है. सेंटर, दूर, क्लोज. Your middle tower is under attack. Science. Dire structures are fortified. ए चला गया बैट राइडर इधर से. ऐड बच गया. वो भी बच गया. दुखा.
24 hours remaining for the mega giveaway, bro. Mega giveaway number 3, Your middle where we are giving one lucky member the all new HyperX solo cast. Your middle tower We're has fallen. going. Here goes nothing. Keep fast. Yes. Come. Invoker top. मार दे अल्टी. Your top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Top and bird. The enemy's bottom tower has fallen. सांप डाल दे भाई तू. सांप के बिना नहीं मर रहे. ठीक है. सांप डालना पड़ा रे. इट्स ऑल गुड. सांप के बिना तुम्हारा भाई नहीं मरने वाला था कुछ भी हो. कहाँ से निकल जाना था? वो वाला बोल रहे तू, ब्लड सीकर वाला. अरे मेरे को उसको बेट करना था. मेरे को नहीं लगा था वो रप्चर डालेगा करके. मैं पर्पसली बेट कर रहा था और मेरे पास हील होने वाला था. मैं 24 hours for the mega giveaway, my friend. See? That way. Bro, stop playing top. Why do you keep playing top? चुतिया है रे प्लेयर. ये लोगों को समझ भी नहीं आता कि टॉप लेन इज नॉट फॉर द कैरी टू फार्म आफ्टर द टावर इज गॉन. कोई तो बताना चाहिए इनको. अभी लकीली मेरी टीम ने उधर उसको बचा लिया रोटेट वगैरह करके, बट उसका मूव गलत ही था. My friends, I cannot TP there. Please, can you get out? We're going. पता नहीं क्यों मस्ती कर रहे हैं एकदम. बहुत गलत मूव है ये मेरी टीम का. Play bottom noobs. What was that? I didn't see Place down. क्योंकि खुद गलत प्लेस पे खेल रहा है और आई डोंट नो बोल रहा है मेरे पे स्पेल पिंग करके.
हाई वॉल्केनो गेमिंग व्हाट्सअप। इंस्ट्रीमली एक कुछ तो ये है, मतलब मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऑनलाइन देखा था, किसी ने तो मेरे को बताया था। वो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर रजिस्टर करके उनका एक ब्राउजर कोड रहता है, वो डालना पड़ता है, तो इधर एड्स लगते रहते हैं और वो व्यूज पे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत मिनिमम वैल्यू मिलता है, बट मिलता है। 1000 व्यू पे कुछ तो 2 पाउंड या ऐसा कुछ तो मिलता है उनका एड जब भी प्ले होता है ना। नहीं मार रहे रे रोश। Guys, stop playing top, please. Basic Dota, please. Play bot. शूट ये लोग कौन समझेगा रे इनको? इनके वजह से मैं भी जा रहा हूँ। वो बैटर 10 बार टीपी कर रहा है। पता नहीं, नूब्स है लोग। Stop playing top. Stop playing top. Stop playing top. Okay, just die, bro. Just die. Fucking noob. शीरे मैंने फर्स्ट स्पेल मिस कर दिया, नहीं तो वो मर जाता था इन्वोकर। Guys, stop playing top. Please, my friends, can you play bot? Can we smoke and go bot? Let's try to use the battle ulti. अभी काय का स्मोक, आदमी ने तो ये यूज कर दिया। ओ वाओ, ये आइटम चाहिए मुझे। एटॉस वाले हीरो के अंदर टीम फाइट लेते बैठेंगे तो कितना गलत होगा रे। कितना गलत है एटॉस वाले हीरो के अंदर टीम फाइट फोर्स करना, मतलब। Your top tower is under attack. We need the mid tower, guys. Can we focus mid tower, please? Your top tower is under attack. टॉप टावर जाता है ना दोस्तों, याद रखो, ये टावर जाता है ना, वो लेन खत्म हो जाता है, उधर जाना बंद करना चाहिए। जैसे ये खेल रहा है ना, दिस इज रॉन्ग प्लेस टू प्ले। ही शुड प्ले हियर, दिस फार्म इज हियर, हिज। यू प्लेइंग इन द रॉन्ग प्लेस। गाइस प्लीज, कैन वी प्ले बॉट? हे व्रेट किंग, स्टॉप गोइंग टॉप प्लीज। ये तो अलग ही नशीला प्लेयर है रे, ये तो चूतिया प्लेयर है, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। आई डोंट नो लिखने में इजी है ना, मैं भी लिखूंगा। फालतू प्लेयर, लोगों को समझ भी नहीं आता है रे। पता नहीं यार, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ टॉप पे जाओ मत, टॉप पे जाओ मत, टॉप पे ही जाके मर रहे। ओके लिख तो दिया है उसने, अभी वापस टॉप पे जाएगा तो बदी रहे। Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. बाप रे, ग्लिफ यूज कर दिया। अरे सांप यूज दे रहे उधर, सांप यूज दे, क्ल्यू ग्लिफ करेगा।
under attack. ओ फक 1200 रैंक है दोस्तों वो. इस रैंक 1200 गाइस, समझ रहे हो? मेरा बैट रेडर रैंक 1200 है. कोई एंगल से लग रहा है वो उसने लासो कर दिया एजिस वाले हीरो पे और वो मर गया, खुद ही मर गया. वो मरा भी नहीं. सीरियसली गाइस, पोजीशन 5 इन्वोकर से हार रहे रे हम लोग. खून जलैक्स गेमिंग है, खून जलैक्स. कितना गंदा खेल रहे रे, मतलब बेसिक नहीं आ रहे उनको. 1200 रैंक है रे, शर्म आनी चाहिए 1200 रैंक पे ऐसे खेल रहे. तो इंडियन है वो. ओके, नो डाउट ये इंडियन प्लेयर है अपना. बाप रे नशीला. ये प्लेयर मेरे गेम में पहले भी आया और हगा दिया है, पता है. ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज प्लेइंग सो बैड इन माय टीम. ही इज रैंक 1200 बैड राइडर. बेसिक नहीं आते डोटा खेलने. टॉप लेन में जा जाके मर मर के उतना ये दिया है ना. Has fallen. पता नहीं रे ऐसे क्यों खेलते लोग, क्यों करते हैं. Your top tower is under attack. अपने इंडियन ही लोग ऐसे खेलने लगे तो क्या करेंगे ने बताओ. नो बुलशिट, व्हाट्स अप. इनको मतलब गाली भी नहीं दे नहीं सकते. Let's go. Sit and watch. That way. थोड़ा और चाहिए. Huh? What? बायर नहीं है रे, वो आता है गेम्स में. ये ब्रैकेट में खेलता है वो. मतलब उसको सच बताऊं तो आता रहेगा डोटा, बट जो छोटी छोटी चीजें वो पता नहीं रहेंगी. जैसे टॉप लेन में नहीं खेलना है, मैप पे किधर खेलना है, किस पे चढ़ना है, वो सब पता ही नहीं है उसको. काउंटर लेन में वो हार गए हम लोग लेन, क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहा था. मर गया ये. कितना फाइट स्प्लिट है हम लोग का, किधर कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है. बैक 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 मिस हो गया मेरा. सैडली मिस हो गया रे. वो मिस नहीं होता तो कुछ होता था. You sure? Quit arguing. Huh? What? Here goes nothing. Woohoo! Hope this works. ओ भाई मर गए क्या, मर गए. Yes. गुड नाइट विपुल, कल मिलते हैं. आ जाना टाइमिंग पे. भाई वो भी लोग तुझे गाली देते रहेंगे, कैसा टेकिस खेल रहे, किधर सुसाइड कर रहा है. श्योर प्रणव स्मार्ट लग रहा है चैट में मेरे को लगता है. देख मैं रैंडमली वो लोग मर रहे इसलिए गाली नहीं दे रहा हूँ. एक डोटा का एक ये रहता है कि ये एरिया में खेलेंगे तो मरेंगे नूब जैसे, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं.
मैं इसे रैंडमली वो लोग फीड कर रहे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ. दे आर प्लेइंग इन द रॉन्ग एरिया. अगर ये तुझे पता नहीं रहेगा तो उसमें मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता हूँ. फालतू में यार तेरे को आंसर करते करते मेरा हीरो मर गया. एक्चुअली मेरा ये आने के बाद मैं उनको एक एक सोलो किल कर सकता हूँ मैप पे. Off we go! Hope this works! कितना चाहिए? 3000 गोल्ड चाहिए. ठीक है, उसको चाहिए ब्रेकिंग को. Think fast! Here goes. Your bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Money changes hands. पीके भी आ गया है. Bottom tower is under attack. ठीकेगा. ब्लिंक बीके भी पकड़ना मुश्किल है. बैट राइडर ही पकड़ सकता है, Your bottom बट बैट राइडर भी पकड़ेगा तो उनका फॉलोअप है बहुत ज़्यादा. बायबैक भी रखना है मुझे. बायबैक भी रखना है. सैड. अगर आंसर नहीं करता तो भी मरता था. ब्लेम दूसरे पे मत डाल. ठीक है भैया. और कुछ भूलना है तो सब बोल दो. अभी गेम के बाद आंसर करूंगा. रॉड वाला बीएस मार रहे हैं. हाँ ना यार, वही तो बुरा लग रहा है. मेरी टीम रॉड वाले बीएस से जाके मर रही थी. वो जब स्टार्टिंग में रॉड बनाए थे तभी ये एरिया लोगों को पता नहीं रहता है. कुछ कुछ लोग रहते हैं जिनको अकल नहीं रहती है. वो लोग ये एरिया में खेलते रहते हैं और मरते रहते हैं. इनको पता ही नहीं रहता है कि ये टावर जाने के बाद क्या होता है. वो क्या कर सकते हैं. उनको समझाएंगे तो वो कुछ तो लोटस ऑर्ब लगा के नहीं गया. वो स्टन उस पर फेंकेंगे तो उल्टा स्टन अपने भी आएगा. सो इट्स बेटर वी डोंट व्हाट यू कॉल ट्राई टू टेल देम एनीथिंग. अरे यार और एक हाय राहुल. हाँ ना रिहा, क्या बोलूं अभी. चलने दो, अभी क्या कर सकते हैं.
एक्चुअली मैं खरीद रहा हूँ, फक इट रे। वैसे भी सामने वाले ज़रा ज़्यादा ही फैट है। ये आइटम से कुछ फ़र्क पड़ सकता है फाइट में। चैट में बहुत दिन से कंटेंट, चैट वाला कंटेंट नहीं था, आज मिल गया है। We're going. अरे यार मैं डुबा दिया। अरे यार माय बैड डूड, सीरियसली माय बैड। मुझे ना शामन मारना था, ये क्लिक ही नहीं हुआ। फक, ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ यार। शिट, शामन मारना था मुझे। बहुत ज्यादा ये हो गया। शामन उड़ा देता, सांप नहीं गिरते थे, सांप नहीं गिरते थे, ये रैक्स नहीं जाता था। गेम हो गया। ठीक है, अभी भी एक ही रैक्स गया है, दूसरा लेग हम लोग डिफेंड कर लेंगे अनलेस दिस गाइस डाई। अरे बचाओ उसको, नहीं बचा सकते एक्चुअली। चलिए डाल देना चाहिए अल्टी इसको। ठीक है, मर गया। ओ नो, क्लोज। टीम मर गए, बीएस मर गए। ओ उसने ये बनाया है। कोई है क्या मेरे साथ स्मोक करने के लिए? मैं अकेला तो नहीं जा सकता हूँ 4 हीरो के सामने। फक माय बैड गाइस। और चाहिए कोई तो। ओ भाई के पास बीके भी है, अभी तक यूज़ नहीं किया उसने, और अभी आया मतलब उसका बीके भी। इन्वोकर के पास बीके भी है क्या? नहीं, इन्वोकर मार सकता हूँ मैं। इन्वोकर मार सकता हूँ बोले तो इन्वोकर मार सकता हूँ, बट गेम कैसे जीतेंगे? ओ गेम lost guys, not yet actually, lost fuck। शीरे, चुपचाप गेम खेलना चाहिए था। fuck। कितना टाइम है वो गेम को चालू, मतलब कितना गेम हुआ है उधर, वो देखना चाहिए कि गेम खेलना चाहिए एमएमआर। मुझे एमएमआर खेलना है सच कहूँ तो। और वो पहले ही ड्राफ्ट चल रहा है। नाइस, देख सकते हैं गेम हम लोग। टाइमिंग पे आ गए रे इधर हम लोग। Necro got beaten like my father hit me. Oh my god. चलिए, नेक्रो पहले ही बोल रहा था एनीवन वांट्स मिड। छोड़ो, वो तो सब अलग बातें है। प्रणव भाई किधर गए? प्रणव भाई किधर गए? प्रणव भाई जरा बोलो, अभी बात करते हैं। क्या क्या बोलना चाहते हो जरा बताओ। I mean, that's the hero that's going to be able to... Hi Ramlal, this game is called Dota, my friend. इसको Dota बोलते हैं, Dota. I think it was their best pick in that situation. I think it was probably going into that phase as well. Also helps this Ember a lot in that game in terms of their stuns are limited. Now you're one stun. If you save off this lasso, save off a charge. Hello Ansh, thank you so much. डिस्कॉर्ड पे तो है ना? डिस्कॉर्ड पे क्या चाहिए बताओ रामलाल। This is like right up Beastcoast alley in terms of comfort and their ability to just be crazy and scale, and Hector get a buttload of items.
They might not have what it takes to be able to deal with the Ember, so they need to play around it. But I think hitting the timing with the Bristleback is going to be crucial, and they do have a lineup that comes online very fast. And also this time around, the K1, he's not some farmer that doesn't want to join a fight. He wants to be active. He's playing the Bloodseeker. What happens when he gets tri-lane though? Which is, I feel, again, what they're looking at, right? They're very happy to try and get this Legion versus Bat one-on-one. Tri-lane the Bloodseeker, who historically can suffer in those matchups. Right. I mean, their tri-lane is absolutely absurd. Ench, Grimstroke. नो चांस एक्चुअली डीपीसी में है, डीपीसी ईयू वाले में वो मैंने देखा, उसका नया टीम है, एक ईरान या इराक का कोई तो टीम है, ईरान है शायद से, ईरान वाला टीम है, उसने नो चांस उसमें खेल रहे हैं सपोर्ट। वो अकेला प्लेयर है इंडियन जो डीपीसी में खेल रहे हैं भाई। क्यूटीएल मिड बहुत डेंजरस है भाई। कौन भर रहा है उसको? स्टार किसका नाम है? वो ये भर रहा है उसको। नेक्रो ने थर्ड स्पेल मैक्स किया था, सेकंड स्पेल लिया ही नहीं था क्या? लिया था, बराबर लिया था। चलिए अर्ली लेवल्स उसने हील के ऊपर ये मैक्स किया, हार्ट स्टॉपर आ रहा, इसलिए उसको वो बोल रहा है शायद से। 9 लेवल को ये डेथ पल्स मैक्स हुआ है उसका, 9 लेवल पे, जो कि बहुत गलत है। ये मैक्स 3 लेवल का ये लिया उसने, पर छोड़ो उस पे क्या टाइम वेस्ट करके, गेम हार गए। हम्बल रिक्वेस्ट भाई, डिस्कॉर्ड आके क्या करूं? रामलाल क्या चाहिए क्या डिस्कॉर्ड पे भाई? In diapers, probably. As here we go into the game, and as usual, Beastcoast have a crazy aggressive lineup with the blood. और क्या करूं? वीसी आके क्या क्या चाहिए क्या तुझे? क्या बात करनी है? I gotta say, Sinner, they are one of the most exciting teams to watch, and it's वो किसी और को सुनाना, हम लोग को नहीं जरूरत है वो सब। इधर हम लोग को तो चैट से कुछ नहीं चाहिए भाई। Yeah, 2 teams in top 6 already. Let's see how far they can go. Obviously, Beastcoast here, and then tomorrow you're going to have Thunder Awaken as well, playing up against OG, who just came off of a victory in the other series. बाकी के प्लेयर मेरे को पता नहीं रहे किधर क्या कर रहे हैं। Not in contact. Not even better. You know, we've seen from Beastcoast, they've been improving gradually. रामलाल का टाइम आ गया भाई, रामलाल का टाइम आ गया। चलो रामलाल किधर है? बहुत दिनों बाद हेटर्स आ रहे चैट में, जोक सुनाने। चल भाग इधर से, जोक सुनाना है। एक जोक मैंने भी सुनाया, अभी थोड़ी देर के लिए चुप बैठना। ओह, It feels like every time they pick Bloodseeker, they win. And the funny thing is, you know they're picking Bloodseeker most of the time, right? कितने आईडी बना के आए रे आदमी? कितने आईडी बना के आए रे? Something that other teams aren't picking in general and still find success is extremely impressive. कितने आईडी बना के आए? बहुत दिनों बाद चैट में आए रे। And it's the same for Beastcoast, really, right? This is yes, उसके शूटर लोग हैं। Basically, I want to say until they faced TSM, I think they were like 6-0 with their Enchantress strategy. And in all fairness, in those 2 games that they did lose, they were looking like favorites, especially in the second one. They were super far ahead in the early mid game. The first game was very close until they suddenly got 2 lanes of Barracks, but then dropped the ball a little bit and got countered. प्रोजेक्ट कर रहा था कोई नहीं भाई, हम लोग ने ओजी वाला गेम देखा, बहुत मस्त गेम था ओजी वर्सेस फनाटिक। East Coast being in a similar position here, where they need to come back from a rough early laning stage with this Enchantress potential trial. सारे एक साथ आ गए भाई, सारे एक साथ आ गए। Talk to me about the Bristleback. Another hero we don't get to see that often. Obviously, LC a pseudo counter to that hero since you have चैट में मसाला है आज, जरा टाइम पास हो जाए, बोलने दो। Actually attack, which leaves him. हाँ मैं नहीं गया, मैं उतना नहीं, मैं ना वो आदमी को है ना जो रामलाल है ना, उसको बस टाइम आउट किया है, वो आएगा थोड़ी देर बाद। रामलाल को मैंने बैन नहीं किया है। ये एक दूसरे आईडी से आया, करो नए आईडी से लेके आओ, मुझे व्यूज दे रहे हो, मुझे तुम लोग कंटेंट दे रहे हो चैट में, इट्स फाइन। K1, he's going to get Chaos Bolt. He gets up a nice blood right, and that was basically just to ensure the rune for game and Gladiators. And it looks like it's going to be 3 for 1 in terms of the bounty rune in favor of game and Gladiators again. More than anything, this Bristleback pick just shows me that Beastcoast have a really good idea and understanding of how they ड्राफ्ट वाइज है ना वापस भाई, वो सैलरी कितनी बार एन्चेंट्रेस खेलेगा रे? ओह माय गॉड।
they have this spread damage that will allow their Bloodseeker to snowball the fight. Even if you kill Bristle, a lot of the time he will deal a lot of damage, right? Just randomly across the fight if he gets to turn his back. And at that point, your Bloodseeker can win. वो अरे ये एक ही आदमी है, उसके 2-3 शूटर है. Pressure game and Gladiators a little bit in that laning as well as mid-game aspect, but if there's anything this team has proven to us time and time again is slow mode चालू करते हैं जरा. ये बहुत spam कर रहा है. Consistently coming out of these ench lanes with a pretty major advantage most of the time. I mean, we've had games where the score is similar on respective sides, and Gaming Gladiators way ahead because Celery is the one dying, right? He's kind of sacrificing his life for the betterment of his team, as we're seeing him get harassed a bit, but he has the regen. Stinger does not. We'll be able to get away, but still taking heavy damage nonetheless. Already zoning him out. ज़्यादा flee हो गया तो time out. Matchup being Legion against Bloodseeker up here is pretty good for Legion in the beginning levels for sure. Spam किया, फालतू बड़बड़ किया, डायरेक्ट टाइम आउट कर रहा हूँ. ज़्यादा एंटरटेन नहीं होने वाले. टाइम पास करना है तो करो, नहीं तो किसी और को ढूंढो भाई. Ember Spirit, so typically Bristle likes playing against melee heroes. Bristle mid खेल रहे हैं, मैंने अभी देखा. Oh my god. Might be a little bit outdated, but at least back then, I want to say a year ago or something. It's not very often you see Bristle versus Ember, right? But I feel like Bristle was generally favored in this matchup. You can bypass Flame Guard entirely because your pull spray is physical damage. You just pressure him as much as possible, and then you can go and farm stacks in addition, which Ember will. Ember versus VV matchup देखना चाहिए क्या जयेश? As well as the medium camp, but he can't go and get those ancients as well that C-Small will be able to do here if they do stack them for him. So a lot of the time, a mid Bristle back. अरे छोड़ रहे, बजने दे. वो लोग को लाइफ में अटेंशन नहीं मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इसलिए वो लोग इधर कर रहे. करने दे, थोड़ा अटेंशन तो भी मिलेगा. उनको इग्नोर करके इधर देखते हैं अपन गेम्स के. अपने लोगों से बात करता हूँ, वो लोगों को जो बजना है बजने दो. वो अकेले हैं बेचारे लाइफ में. When the enemy teams start getting specific items like Silver Edge, the game can get really difficult. And obviously, Gaming Gladiators have two potential Silver Edge buyers here in both the Chaos Knight and the Legion. Well, speaking of the Chaos Knight, in both position ones, in fact, look at their CS. भाई बहुत अलग-अलग पिक्चर है इनके पास. BB mid, Bloodseeker carry. Bloodseeker from K1. So we'll see if they're able to continue this pressure on me. Obviously, Legion extremely good at doing this against. दूसरी बार 12, तीसरी बार 12 खेल रहे हैं. वो इनके सामने भी 2 गेम 12 खेले वो लोग. Big nuisance. सी के हर गेम दिखने ही वाला है भाई. स्ट्रॉन्ग हीरो है वो, क्या कर सकते हैं. है स्ट्रॉन्ग तो है स्ट्रॉन्ग ब्रो. I think the hero is a bit underrated, to be honest with you. I feel like everybody kind of just forgot about it. Dota is often about trends, right? Like this hero, oh, hang on, Whisper, bottom lane. There's a lot of stacks on Tofu here, though. Yeah, has to be careful. 8 stacked. Whisper could have thought about Celery vegan pick again, हाँ ना. Ace out of lane in the meantime, so K1 securing some last hits now as a result. Yep. Back to the Spear Breakers. Yeah, so I think teams kind of forgot about this hero to an extent. One of its biggest weaknesses is the early laning. No bro, Rahul. A lot of the meta lanes don't really get pressure too much by it. मतलब मैं तो खेल सकता हूँ, बट 5 प्लेयर खेलना मुश्किल है. 5 प्लेयर खेलना मुश्किल है वो वाले प्रेशर में. और वो सिनारियो में प्रेशर, मतलब प्रेशर तो अलग ही है. वो सिनारियो रहता है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ सोचना पड़ता है वो टाइमिंग पे. This pairing is why they pick SB. I don't think they will pick it with a lot of other stuff. But you know, it's just good to see the hero. I think it's really fun. It's one of my favorite heroes to play and watch. Nobody can deny that. Oh, इधर भी LC है, मैंने अभी देखा उनका ऑफलेन. Ace. Before TI, sadly we're not seeing that anymore. Stinger taking more damage from Ace, as there has yet to be a first blood, despite this being such an aggressive line. I mean, when does Beastcoast want to start, you know, getting a little bit more aggressive? Because right now they're being slightly passive based on how their lineup looks like. As I say that, it's Celery coming in with the Mud Golem onto Smile. He will live through the day, but the baby shards come out now. Those are things you truly have to fear as he kills them easily. The little known follow-up. CK कैरी जरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रे, जल्दी फार्म करता है, बहुत ज़्यादा मारता है, लेनिंग में भी स्ट्रॉन्ग है. ओवरऑल पैकेज है CK. क्या कर सकते, बहुत ओपी हीरो है. दिखेगा ही वो, जब भी पिक नहीं होगा ना वो, मतलब बैन नहीं होगा तो पिक होने ही वाला है वो. From the get-go, right? Their mid hero is not a ganking, rotating hero. You have a 5 Pugna, so all of the playmaking. First blood on Morph. Why वो तो पता है क्या? वो लोग ने वार्ड लगा के मारा उसको, वो वार्ड खुद से ही डिवर्ट करके चले गए. सामने वाले को वार्ड भी नहीं दिया वो लोग ने. बहुत ब्यूटीफुल खेला वो लोग ने पहला 15-20 मिनट.
Game and Gladiators opening with Ench. This is what happens in a lot of the games, and then it comes down to how much team fighting prowess they have afterwards. बड़े अजीब है हाँ ना यार. So yeah, I think it's going to be relatively quiet from Beastcoast until the 10-minute mark, and then we'll see. कुछ तो प्लान रहेगा वो लोग का BB mid के साथ. Well, connect. Gojira obviously has charge, so he's going to be more than fine. Stinger taking more damage in mid lane. He's talking about Celery coming in so early for this tier 1 mid with that catapult. And it looks like they're going to be able to get it with no real defense panel. We've seen Beastcoast give up these towers relatively early as well. But once they hit their timings, that's what I think they're really strong at, is getting those timings and taking advantage of them immediately. It's just textbook Ench. This is what you want to do. Minute 5, the siege creep comes. You identify which lane you have the highest pressure probability in. You run over there, you put the pressure pre-siege creep so that the enemy team cannot mount a defense, and then you just claim it fully. Yep. Bristleback losing his tower to Ember minute 6 is actually a crime, you know. I feel like East Coast, if possible, should have done something more about this, but I just don't know if they could. It's got to feel bad, but looking at what heroes they could have rotated in, who's going to stand up to this Ench? Shield breakers? Incoming. Press the attack is there for Ace. Doesn't look जिगर भाई जाने दो, क्या कर सकते हैं, इससे लोग आते रहेंगे. थोड़ी देर बचने देने का, फिर इग्नोर कर देने का. वो एन्चेंट्रेस का MVP प्ले ब्रो. वो एन्चेंट्रेस ने देखा किधर प्रेशर कर सकते हो. अभी एक्सप्लेन नहीं किया क्या कास्टर ने, बोला ना जब भी कार्ट आने वाला है उसके पहले ही जाके प्रेशर किया और फिर टावर ले लिया कार्ट वेव के साथ. वो सेलरी बहुत स्मार्ट है बंदा, बहुत स्मार्ट है. वत्सल सुमेल का पता नहीं यार, लोग बोल रहे वो निगमा जाएगा, बट मुझे लग नहीं रहा है वो निगमा जाएगा, पता नहीं एक्चुअली. गलती से ब्लड भी फैट हो गया तो गेम जीजी हो जाएगा. नहीं ब्रो, वो लोग के पास है. वो बीबी फैट भी हो गया तो भी एलसी पकड़ के उसको मार सकते हो लोग. अरे मर गया टोफू, मर गया. वो As meanwhile, top lane, K1 doing a little bit of damage. Ace will be able to get out with just a sliver of HP, but Gojira with the charge. Oh, rupture डालना पड़ा उसको. Okay, that was a little scary there for a second, but Beastcoast gets the better of that trade in the top lane. Well, as I say that, Gojira's dead. Yes, ILTW भी गया और ये भी गया सुमेल. I feel like this game's अभी सीक्रेट में क्रिस्टलिस आने वाला है. क्रिस्टलिस जो एंटिटी गेमिंग का कैरी था अभी. Beastcoast also against BetBoom earlier were having some really tough times in the earlier portions of the game, and then they come back through mid-game team fights. And for Game and Gladiators, this is their comfortable position that they find themselves in basically 2/3 of their games, but then obviously in the TSM series did not convert it to a win. So very likely that we'll be seeing more of this in the coming games of the series, but for now, it's kind of par for the course for both teams, I think, with what we could expect with the lineups. Oh, boom. This is a very good position to be in against K1. Yeah, gets off the slide, but Searing Chain's not used yet, but K1, there we go. He's going to take some damage, but the slide of fist, nice dodge onto the Blood Ride. Not enough damage regardless, though, as Boom. Must dodge किया उसने Blood Ride. Here, Tofu. Looks like he's going to be taken out first. And Stinger will be the trade, so support. Boom's in trouble. He does not have a remnant. Nice. Wait, he had a remnant. Must dodge किया उसने. I think I got myself there, actually. I was going to run to several members of Game and Gladiators. Durachio's here as well, as the hurricane action there from the Wild Wing. ब्लड सीकर मर. अभी भाई Durachio pops the ult and like एक मिनट, ब्लड सीकर कैसे खेल रहा है? ओ बेट कर रहे हो. मैं बोला क्या कर रहा है ब्लड सीकर? बेट कर रहे हो टावर के नीचे. ये प्रेडिक्शन गेमिंग ग्लैडिएटर जीतेगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है. सीजी ने बताया सीक्रेट ने उससे कांटेक्ट किया है. नहीं रे, कुछ भी नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल है. Going to TP back to base with that remnant in place. As Ace, I don't believe we saw one duel actually in the top lane, but no damage as of yet. I think it's slightly different distances to the cameras there. Yeah, that was a very interesting angle indeed. Let's go Gojira, Searing Chains, Inkswell's coming for you. He gets off the charge, but it looks like the Inkswell will be enough to stun him in place, and the Sleight of Fist to finish him off for Boom. Stinger will secure the 10-minute rune though. And Beastcoast have kind of stopped the bleeding a little bit, right? They were 2k behind 4 minutes ago, and now it's down to 1. And they're starting to ramp up toward that mid game that they love to play with these heroes. So
What kind of salary these players get other than the prize money? भाई बहुत ज़्यादा salary रहता है, बहुत ज़्यादा salary रहता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा salary रहता है, और prize money तो अलग रहता है. In this game, he's also doing well. It's by no means a bad look for him to be. Think Beastcoast will win this? No, I think ये पहला वाला game तो Gaming Gladiator जीतेगा. Just ready to take over. Unless they throw it like yesterday. Top lane, tower's low. Yep, another steering chains coming in and Centaur stomp as well. Gojira just. भाई ये गोजीरा है ना, सेकंड स्पेल लेता ही नहीं है 12 पे, मुझे समझ में नहीं आता कितना इंपॉर्टेंट है वो स्पेल. As well, so Stinger gets off to decrepify, but Whisper's the real prize here for Gaming Gladiators. Another stomp comes out with that. Oh, wow! Enough to take out Boom. Big turnaround for Beastcoast. भाई ये लोग पुगना मारते बैठे, उधर बैट राइडर मार के बच गया. क्या खेला है वो बैट राइडर, ब्यूटीफुल. यस, वो तो अलग रहता है, डिपेंड्स. कोई कोई लोगों का स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कोई कोई लोग ऐसे ही करते हैं खुद के लिए, कोई कोई लोग का स्पॉन्सरशिप रहता है अलग. Apart from this, celery inch by OPA. He goes drum to have that early fighting impact. So we are going to get the replay here. So Spirit Breaker, 0 impact in this fight except tanking some spells. And now, so they do throw out the stun already, and I guess nobody can connect with Boom here. Oh, they are actually trying, but Durasho doesn't have spells ready. And Boom walking in melee range here, thinking he can get the kill, gets punished immediately. So bit of a mistake from him there, to be honest. Uncharacteristic. Indeed, and we talked about a lot of these players do not have experience on the stage, Cinder, so that is something to certainly keep in mind. That's a lot of damage. 51,000. That's not possible. As Celery getting chased now by C Smile, he's going to get reality rifted onto the high ground though. 2-second stun from Duraccio, trying to face him. Ace with that duel will be the first victory of the game for him. As Gaming Gladiators trying to continue this onslaught. Looks like 2 is going to be the limit. Another 51,000 for C Smile, man, he's just out of control. कास्टर मस्त है. The 1K lead for Beastcoast का अब तक प्लान समझ नहीं आ रहा है. Good news for Beastcoast is in terms of the net worth, it has not really. मुझे लगता है वो लोग को मिड, उनका बूम, वो बूम थोड़ा एक्टिव खेलता है तो उसको स्लो डाउन करना था, वो मिड पे मार नहीं पाए, ऐसा कुछ तो ही रहना था, क्योंकि उनको पता था ये लोग मिड पे बहुत गैंग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. वो फार्म तो हुआ, मरा तो नहीं, बट उसके आगे क्या करने वाले पता नहीं वो लोग बीबी के साथ. बोला ना मैं, बीबी के लिए एलसी है, एलसी उसको डुएल करता है तो उसका फ्रंट आता है ना एलसी के मुंह पे, समझा क्या? ये देखो, मार सकते हो लोग आराम से. ठीक है, डैमेज कम था, कैरी नहीं था. प्लस बैट राइडर के लिए एलसी भी है रे, सेकंड स्पेल करके वो बचा सकता है. अभी तो उसने एलसी को ही पकड़ा, वो बात अलग है, बट वो दूसरे पे किसी पे चढ़ा तो एलसी वो लासो भी निकाल सकता है. नाइस, पकना मारो. Looks like they'll find one. Celery healing himself, but wow. But the center stop onto 2 out of nowhere. He will fall eventually, though. And there's a Chaos Bolt onto Gojira. He just respawned. Looks like he's going to drop pretty much right away. Blood Rights there from K1 as well. अरे अल्टी नहीं कर पाए वो, बट ठीक है, अभी करेगा. नाइस, टीम वाइप होने वाले भाई 14 मिनट पे. नहीं नहीं, बच गया बीबी. ठीक है, 2 सपोर्ट के लिए 4 हीरो मरे, इट्स ऑल गुड. प्रोडक्शन वाइज डेंजर है. This is a weakness that Bloodseeker has right now in the game. The hero is inherently not very tanky. He does have 10 armor as well as a broom handle and phase boot, so you would think he's tanky, but the spells. रिस्पेक्ट बैन तो करो यार, बूम का एम्बर बैन करो भाई. नहीं कर सकते ना, अभी इतने सारे ब्रोकन हीरोज है, इतने सारे ब्रोकन हीरोज है, क्या क्या बैन करेंगे बता मेरे को. बहुत मुश्किल है ऐसा ड्राफ्ट करना, और स्टार्टिंग में 2 ही तो बैन है. सीके एन्चेंट्रेस से वो लोग ने ओपन किया रहेगा फिर सोच के, बट बूम का एम्बर सच में अच्छा है, इज वेरी गुड. वो सेप बोल रहा था कि आना की तरह खेलता है वो ऑलमोस्ट. शी यूजेस थर्ड एंड कोई अलाइ नियर बाय है तो दोनों
you look at the 1-2 Radiant heal lineup and how मिलेंगे. they scale into late game with both Legion, Ember, and Chaos Knight, and you feel like, wow, they will be insane late game. And the enemy team has heroes. शेयर होता है वो हील, सबको नहीं मिलता है, शेयर होता है वो हील. वो विस्प रहते हैं ना, पर विस्प हीलिंग रहता है, ऐसे नहीं रहता है कि जगरनॉट की हीलिंग वार्ड की तरह नहीं रहता है वो विस्प रहते हैं ऊपर एन्चेंट्रेस के ऊपर. I don't really have a clear favorite if we just वो तो है, एम्बर अच्छा खेलता है. ट्विटर पे कुछ मीम नहीं आए अच्छे. ओजी हारा नहीं ना, ओजी हारेगा तो देख वो सीक्रेट वाला कैसे मीम डालते बैठेगा. ड्राफ्टिंग बाद है ये तो सेफ पेपर्स लाता है यार. Beastcoast not reading this as Gojira is going to get the charge off in the bot lane, but Remnant back boom doing a good job of kind of baiting it out. Major is going great, bro. Space so they can take Roche completely free. It is All the top tier teams, मतलब old teams are out. Like Spirit is out, this guy Liquid is out, फिर और एक टीम आउट हो गया, Boom is out. Hi Kev Shake, what's up bro? एक विस्प 10 हील देते हैं. हाँ एम्बर बहुत मस्त खेल रहा है भाई, वो बेट कर रहा है 12 को, फिर दूसरी तरफ चले जाता है, फिर 12 का 4 सीढ़ी रहता है ना इतने टाइम. इट्स बेटर कि ये बेट करे और किसी और पे ना जाए, किसी और पे जाएगा तो रिस्क रहेगा. Both Stinger and C-Smile are pushing bottom. It is only level 2 Nether Blast though, so taking this tower is taking an eternity for him. Slow and steady though. भाई बहुत मीम बना रहे वो लोग, एयरपोर्ट पे वो पपी ऐसा खड़ा है टीम का नाम लेके, क्या क्या मीम बना रहे वो. 8500, he is very farmed, has the halberd, already had that Vanguard at a record pace for this tournament at least, and going towards the BKB. And for K1 on the Bloodseekers, he's had the Maelstrom for a while, so again, a lot of these teams trying to ये सेलेरी आदमी खिलाड़ी है भाई. timings, and that feels like, especially for Beastcoast who have such an aggressive lineup in general, that seems like absolute go time for them. Yeah, for sure. It's the best time for them to do something against the Radiant. The only real counter that Gaming Gladiators have to BKB is the Legion Commander duel. When it comes to Chaos Knight, I suppose when they BKB, they are a little bit more susceptible because they can't, like the Decrepify isn't going to have the impact that it has in other situations in the game. But you look at Stinger, he is maxing it out. So I really like the build from him here. I think he's going to commit for it and go 2-4-2 to just have that maxed out Decrep against Chaos Knight. He's going to have it to protect from the duel. It will be a really, really nice spell to have, and it will be their reliable way of handling Legion Commander. OG भी मस्त खेला भाई, बहुत ओपी था. हाय मुस्तजाब, व्हाट्स अप. टुंड्रा शायद सीक्रेट को काउंटर दिया था, शायद कुछ तो बोला था. हाँ हाँ हाँ, टुंड्रा वाले ने भी, टुंड्रा वाला भी डाल रहे हैं भाई ये ट्विटर पे मीम्स. Tier 2 tower in favor of Gaming Gladiators. Was bound to fall there. Name your top 3 players in the present times. Them to try to use it in some capacity, although Top 3 players in the present times. As well. We have the Blink Dagger now and CK and a smoke from Gaming Gladiators. कैसे बताऊँ मैं, टॉप 3 प्लेयर्स ऐसा नहीं है, बट मेरे फेवरेट प्लेयर्स अलग और टॉप 3 प्लेयर्स अलग. टॉप टीम तो अभी के लिए टुंड्रा है ये टूर्नामेंट का, तो उसके कोई भी प्लेयर्स लेंगे तो सब सारे के सारे अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं. वो 33 तो खिलाड़ी से बहुत मस्त है. टुंड्रा है जो टुंड्रा के सारे प्लेयर्स है, और कौन से टीम्स के अच्छे हैं. पाकास एक अच्छा है, पाकास फ्रॉम बी थंडर अवेकन. और कौन है रे, बूम का मिड अच्छा है, क्या नाम है, योपाज. ऐसा मुझे अभी तक पता नहीं है टॉप, बट ये सब सारे अच्छे लगते हैं मेरे को अभी फिलहाल तो. दे आर डूइंग वेरी गुड, लाइक दे आर प्लेइंग वेरी वेरी गुड. टॉप टियर डोटा खेल रहे हो लोग एकदम, ये सारे जो मेंशन किए मैंने अभी. Gojira, that's going to be a short duel. He's not winning that. Yeah, but you know they get the kill nonetheless, and the outpost does not go to the enemy in this case. So Gaming Gladiators able to extend their lead. So 5k lead for them. And we'll see, yeah, with the BKB now online for Ember, tier 1 tower in their favor as well. Yeah, but the BKBs are coming out now. So K1's got his. Whisper's got his. About a recipe away for the Bristol, though. I think the Bristol's BKB is the least important, though. I wonder if they want to stall out for another 1,300 gold for him, just because with the Batrider and Bloodseeker having theirs, I actually think they're in fighting shape. But do you want to fight into Aegis?
Another minute. That is true. If they wait that out, probably wait that minute out, but then maybe you don't wait out the full. At that point, maybe you might. FY, yes, मेरा favorite player है भाई. Oh, never mind. They do I like Seb. No doubt I like him, but वो दूसरे रोल पे खेल रहा है तो उतना अच्छा नहीं लगता मेरे को. He's good on his own role, और जब भी वो proper Dota खेलता है, ये तो proper नहीं है. He's a stand-in right now. That is a huge kill for Gaming Gladiators. Ace finally falls as Boom again just cleaning up left, right, and center, but CK's in a little bit. ये Aegis नहीं है. Ember पे Aegis है. Okay, बच गया वो. Oh my god. Illusion जो damage कर रहे हैं ना. Oh my god. And looks like he's still going to be able to armlet toggle through this. Another chaos bolt Wow. and Dyrachyo lives. Dyrachyo. Absolutely huge way that fight starts for Gaming Gladiators. They kill the Pugna. And on top of that, I think Bloodseeker ran into. कौन सा mic expensive है? The one you using? मेरा वाला ये expensive है क्योंकि इसमें जरा RGB वगैरह ज़्यादा थोड़ा extra चीज़ है. If they buy these BKBs and they don't get to cast them, it's just. मेरा कुछ तो 12 to 15k का आता है. 12 to 15k के बीच में. वो वाला जो मैं दे रहा हूँ वो 7k का है. 7.2 या कुछ तो. TI-8 वाली PSG LGD भाई मस्त थी. वो भी मस्त थी. अभी की भी मस्त है. दोनों LGD मेरे को पसंद है. बेसिकली मेरे को आमे पसंद है. आमे मुझे लगता है वर्ल्ड्स बेस्ट कैरी प्लेयर है. वाओ. आमे मैं बोलूंगा टॉप कैरी प्लेयर है. जेरेक्स अभी वो ब्रेक लिया रे लाइफ में. ब्रेक लेने के बाद वो कमबैक उसका पोजीशन 5 पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उतना. नो डाउट इज अ वेरी गुड प्लेयर बट पोजीशन 5 प्लस वो टीम सब वर्कआउट नहीं हो रहा है उसका. मैथ्स FI गॉड है भाई. टस्क रूबी ES टस्क भी है उसका. सेब एंड कोलैप्स का मैग्नस देखो. ऑफलाइन देखो. वो तो अलग लेवल का है रे. That is not Stinger, but he dropped. 12k lead for Gaming Gladiators, and this is looking very grim. No pun intended for Beastcoast. But then again, in that first series, that looked 100% over, and they came back with a vengeance. Obviously, ended up losing that game, but winning the series. And I think that game 1 comeback gave them the confidence to win 2 and 3. Of course, I'm just making that up, but we'll just assume that is true. 13k. CKLT is inbuilt Manta. हाँ वो तो है. वो भी है actually उसका strength. That's a hella fast Wraith pack, by the way, on Ench. 23 minutes. Did you just say hella? Hella fast. Wow. That is so not a you thing. As we have initiation, okay. Whoa! Gonna destroy Gojira, and now this wow. वो melt हो गया रे. Oh my god, 2 लोग पे duel लग गया है. That is disastrous. But the buyback on Gojira, can they do enough to come back in this fight? They're gonna lose the bristle back to start. Another beautiful slight. Is gonna get yet another kill. 2 लोग पे duel और duel वाले को लासो लेके उधर. 3 लोग ऐसे भाग रहे हैं एक साइड पे. 4 लोग बैट राइडर लेके जा रहे हैं 3 लोगों को. मस्त था वो. I got new pro gaming mouse pad from Corsair for 2,800. भाई price is back to 5k. भाई माउस पैड में इतना खर्चा. क्या वो वाला है क्या? हार्ड वाला RGB वाला? मैं एक्चुअली मैं नहीं यूज कर पाता हूँ वो हार्ड वाले माउस पैड. वो RGB वगैरह. माउस पैड मुझे यही चाहिए कपड़े वाला. विस्पर आयो देखा है? नहीं देखा है. I played 200 games as ES after watching his ES. रूबिक नहीं आता पर. ओह. बट ES भी आजकल नहीं है रे. अच्छा ES कुछ कर नहीं पाता है वो सैडली. टस्क TI-8 FI बोला भी. हाँ in front of Tusk God. वही तो. Bloodright is there. This is going to slow this down a bit as Whisper trying to run away, pops the BKB, but look, Gojira looking to die again. Dyrachyo is going to whip him. Looks like the Pugna is going to be the क्या खेल रहा है रे बूम? क्या खेल रहा है? God like. Already God like. 12-1 score है उसका. Gaming Gladiators are just so ready. I think Beastcoast not waiting for Lasso in this instance is I think it's a commendable play to try to play that aggressive, try to surprise your opponents, because if you just chill out, let things reset, Gaming Gladiators are just in control of the game. अटक गया वापस. Didn't work.
ओके आ गया. And now this looks like it's just going to be a free Roche. No Spirit Breaker, 5v4. क्राउड फिर भी आज वीकडे है इसलिए कम है, कल और परसों ज्यादा रहेगा देखना. लंबे वाला वो मतलब वो इतना बड़ा वाला रहता है वो. ओके 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 समझा मुझे. Believe that is a dieback for him. Steve Smile trying to take out Tofu, but he's just keeping out right in front of his face. And now Chris Smile trying to kill this Wraith Pact. That's all he's focusing on. Finally gets it, a beautiful 20 gold for him. Woo! But now he's completely surrounded and brought down to his knees. Game and Gladiators looking to take Roche in game number 1. Oh, let's not get ahead of ourselves yet. They haven't taken a tier 3 tower. सेकंड रोश है भाई ये. 25 मिनट पे सेकंड रोश ले रहे, 26 मिनट्स पे. I mean, technically both teams are doing that, so it's technically correct. But not both teams are doing Roche, so you were right about 50%, which is pretty good for you. सेकंड रोश है रे अभी इतने जल्दी. सोचो अपने पब्स में तो 26 मिनट तक रोशन तक जाते भी नहीं कोई देखने के लिए. वो मेंबर टू गुड. तेरी टीम का फ्लैग वगैरह कैसा है जो इन गेम बैनर में दिखाऊं क्या? मैं गेम के बाद दिखाता हूँ. मेरा पहले टीम का है, नए टीम का कुछ नहीं है. पहले वाले टीम का सब कुछ रेडी है मेरे. दिखा सकता हूँ मैं तुम लोग को अभी. यंगेश भाई आप आए थे क्या? नहीं यार नहीं आया था मैं जिगर. उसके पहले वाला आया था मैं जो एजे में हुआ था, एजेंट जैक्स. ये नहीं आया. मैं मुंबई से नहीं हूँ ब्रो, पुणे से हूँ मैं. वेरी बैड पिक्स बीबी कुछ नहीं कहा ना यार. प्लान रहेगा वो लोग का, वो वर्कआउट नहीं हुआ रहेगा. इतना दूर आके मेजर में ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी रैंडम पिक्स. वो प्लान रहेगा वो लोग का कुछ ना कुछ तो. MM300 चेक करूंगा बाद में. Look like this, which is how they have looked to be fair. Oh. Throughout the entire tournament, the DPC in general. Spill proof. It's good to see. Okay. It does feel like if Gaming Gladiators, nice. They pretty much every game against every opponent they've had, they have never. I'm trying to remember a game where they were behind in the mid game, right? They're generally either even or very far ahead, like in this game. If you can carry that with you into the next series and just realize how you dropped the ball against TSM in the series that you did and what you can do to prevent it from happening again, you're a team that could go really, really deep in this tournament, even though you're currently, quote-unquote, only top 6. You were picking... देखा मैंने, मस्त है रे. अभी जस्ट वही देख रहा था मैं. कास्टर भाई वो जरा ओपी कास्टर है वो. सनस्पैन एंड सिंड्रिन मस्त कास्टर है. 26 टाइम टू ये आरएस. हाँ ना 26 मिनट पे 2 आरएस हुए रे. वही तो बोल रहा था मैं. What if you could take a loan? And what's the downside to taking the loan? So you go to the shopkeeper, you negotiate a price, you get like 10K, and then 5 you minutes get later, negative GPM. You lose 20K. It deletes 2 items randomly after 10 minutes. That could be an interesting comeback mechanic. Ice Frog, I'm available to hire. Okay, so smoke up on both sides. Somehow that was a way worse idea than what I was setting it up for. As always, Stinger, he's going to be the first to get steering chains. Boom pops the BKB, the leash onto 2. Already a death. तूने कहाँ से लिया? नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ लेना रहेगा बोलना. मेरे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फ्रेंड्स है जो प्रॉपर सेलर्स है. अगर तुझे सस्ते में मिलता रहेगा तो उनसे ले सकता है तू. ओह माय गॉड, सारे सब क्लिप पे बैठे हैं. And the only remaining member of Beastcoast is K1. जीजी है गाइस, ये गेम नहीं जीत रहे इसके आगे. Beastcoast इम्पॉसिबल है इधर से आगे. हीरोज भी नहीं है रे बोले के पास. ब्लड सीकर कैरी है रे. So insanely overwhelming damage against this. No problem. They're actually already setting up for the second lane. He's heading down bottom, spawning an illusion with the Chaos Bolt. Getting to work. And technically nothing is really impeding them from going for Mega Creeps either. There is no tier 2 tower in the top lane. We'll see if they have enough damage to actually चीप लैपटॉप डोटा खेलने के लिए सजेस्ट करो. मैं तो सजेस्ट करूंगा लैपटॉप पे पैसा मत डाल डोटा खेलने के लिए. काम के लिए लग रहा है तो अलग बात है, बट लैपटॉप मत लेना डोटा के लिए. लैपटॉप नहीं है अच्छा इन्वेस्टमेंट. It just like shows how rich he is and the luxury he has of his itemization. And this is looking like the last stand for Beastcoast in game number 1. Duraccio
Not really too afraid. Actually, a nice bash back into the Aegis है, ठीक है. Remember, he does have the Aegis. So that's death number 1. Gojira's already dead. Stinger trying to heal him, but has to be careful as Boom's been hunting him all game long. Now all the damage applied to the CK, but gets the BKB and Phantasm off. K1 is just going to drop to the Illusions and Boom. And it looks like this is going to finally end game number 1 in favor GG, of guys. Gladiators as the GGs come out. What an absolute smackdown. Gaming Gladiators, it looked like Beastcoast weathered the storm quite a bit for a while in this game and kept it close, but you get to the later portions of that game and Gaming Gladiators just completely outplayed. भाई अमेज़न से मत खरीदना, अमेज़न से सस्ता मिलता है. All the way since minute 20. अमेज़न से सस्ता मिलता है आजकल. पीसी प्रोडक्ट्स है ना, अमेज़न पे महंगे रहते हैं, याद रखना. You'll find better and cheaper items on market. अमेज़न से नहीं, अमेज़न से पीसी प्रोडक्ट बहुत रेयरली खरीदना चाहिए जब भी अमेज़न का सेल है, ये वो है. कल जीत सकता है भाई, तुझे पता है क्या? कल जीत सकता है कोई भी. आज मैं ना सारे नाम डाल के ट्रायल कर रहा था और एक भी है ना, एक भी बड़े वाला नहीं जीता. वो बड़ा इसका वाला क्या बोलते हो, बड़ा पोर्शन वाला. बड़े पोर्शन वाला एक भी गेम नहीं जीता आदमी. सब छोटे वाले जीत रहे थे, मैं देखा. तुम लोग को पता है क्या, जो सत्यजीत 2 बार जीता है ना, वो एंशिएंट पांडा है. मतलब उसका 2 एंट्री रहता है. वो उसके बाद एक इमॉर्टल था, 4-5 डिवाइन थे. मतलब 5 एंट्री 10 एंट्री वाले लोग भी थे, बट वो जीते नहीं थे. लुकिंग फॉर वायरलेस गेमिंग हेडफोन्स. ओ वायरलेस गेमिंग हेडफोन्स आप भी के लिए मत खरीदना. मैं तो बोलूंगा वो HyperX Cloud 2 है ना, इंडिया में अभी तक आया नहीं है. आइदर ask someone who's coming from US to get it or else wait. क्योंकि वही तो बेस्ट है, वो नहीं तो Logitech G Pro, ये दोनों बेस्ट है वायरलेस खरीदना है. तो मुझे लगता है कोई दूसरा अच्छा रहेगा, या फिर वो रेजर ले सकता है, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है. वो रेजर का कौन सा है वो, मैं भूल गया नाम उसका. उसका इश्यूज आता है, बट ब्लैक शार्क ही नाम था उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं बोलूंगा कि लेना है तो वो लेना. हाय रेस, ओजी का गेम बहुत ओपी था भाई, देखा हम लोग ने अभी. आई प्ले ऑन चीपेस्ट लैपटॉप कोर i3, नो ग्राफिक बट 8 GB रैम. हाँ तो ठीक है ना, और क्यों चाहिए, वही खेलना है. देखो इसने भी ऐसे वाले नहीं, मतलब लासो का नहीं था गलती. अपने गेम का अलग था. गिव अवे में अप्लाई करने के लिए यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ दिस चैनल ब्रो. मेंबर्स ओनली गिव अवे अपना. नॉन मेंबर्स के लिए भी है कुछ. कल एक कॉन्टेस्ट है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. नॉन मेंबर्स के लिए कॉन्टेस्ट रहेगा. बस तुम लोग को सारे हीरोज का एक बार पोर्ट्रेट या जो भी आइटम्स रहता है वो सब देख के आना है, समझा. तब जाके तुम लोग को कुछ वो कॉन्टेस्ट में जीतने को मिलेगा. कल एक कॉन्टेस्ट होगा जिसमें जो पहला आंसर देगा वो जीतेगा. ऐसे 10 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस या जो भी सीरीज रहेगा 10, वो 10 तुम लोग को चांसेस रहेंगे और एवरी आंसर गेट्स अ गारंटीड प्राइस. ऐसे रहेगा. वाओ भाई, रेस भाई बीच में खुश हो जाते हैं. थैंक यू सो मच मैन. वाह वाह वाह. ये तो मतलब सच कहूँ तो एक्चुअली छोड़ो, नहीं बोल सकता मैं. रुक, लेट मी पुट इट ऑन द स्क्रीन. थैंक यू सो मच मैन रेस भाई. लेट मी पुट इट ऑन द स्क्रीन, वेट. मैं तो बोल रहा हूँ तू मैसेज भी लिखते जाना ब्रो, तो वो मैसेज भी डाल सकता हूँ मैं उसके साथ कुछ. व्हेन यू सेंड समथिंग, ऐड अ मैसेज एज वेल. थैंक यू सो मच मैन. ओ भाई साहब, वाओ, थैंक्स ब्रो. विल गो बाय योर एडवाइस. मैं बोल रहा हूँ पीसी गेमिंग है ना, पीसी गेमिंग का है ना, कभी भी अमेजोन से नहीं खरीदना है. जो भी प्रोडक्ट्स रहता है ना, पेरिफेरल्स, ये वो, माउस, कीबोर्ड, यू विल फाइंड चीपर आइटम्स. और वो भी पूरा मतलब लेजिट, ऐसा नहीं कि
यूल गेट इट फॉर सम स्कैम और समथिंग, जो चोरी का माल वगैरह वैसा नहीं रहता है। प्रॉपर बिल आता है, प्रॉपर वारंटी मिलता है। पुणे में कोई डीलर्स है क्या हाइपर एक्स के? देख हाइपर एक्स के डीलर्स तो ऐसा बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हाइपर एक्स मोस्टली अमेजोन ये रहता है, अमेजोन एक्सक्लूसिव कोई कोई आइटम्स रहते हैं हाइपर एक्स के। बट अगर तुझे चाहिए तो आई कैन आस्क, मेरा पहले टाइप था हाइपर एक्स के साथ, इफ़ यू गाइज डोंट नो, पहले हम लोग का टाइप था हाइपर एक्स के साथ, तो वो टाइमिंग पे मेरा कॉन्टैक्ट अच्छा हो चुका है उनके साथ। मतलब वो लोग डायरेक्टली तो सेल नहीं करते, मतलब वो कंपनी वाले डायरेक्टली सेल नहीं करते, बट दे कैन प्रोवाइड अ कॉन्टैक्ट। अगर चाहिए कुछ रहेगा हाइपरएक्स वाला सामान तो तुम लोग मेरे को बोल सकते हैं, मैं पूछ के देख लूंगा उसको, जो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है। हाँ फ्लैग वाला देखना था ना जिगर, दिखाता हूँ। मेरा पहला टीम था ना, मेरा पहला प्रो टीम, वो था एग्रेसिव 5, उसमें हम लोग का ऐसे था, ये लोगो था, ये पांडा था। पांडा तुम लोग को देख रहे हो क्या? अभी भी मेरा लोगो पांडा है, वो टाइमिंग पे भी ये मेरा मतलब मैं होल एंड सोल ओनर था ये टीम का, तो वो टाइमिंग से पांडा चालू हुआ था। बहुत लोगों को पता नहीं, आज बता रहा हूँ मैं। तो ये मीडिया करके हम लोग का पूरा मीडिया स्पॉन्सर था, तो ये सारे लोगो वगैरह वो लोग ने बनाए थे। और ये गिफ्ट फॉर गेमर्स ने ये दिया था, माउस और कीबोर्ड दिया था, कॉर्सर K70 दिया था ये लोग ने, गिफ्ट फॉर गेमर्स ने। मॉनिटरी कोई नहीं था स्पॉन्सर, बट ये सब था। बट ये लोगो मेरा बहुत फेवरेट था, पता है कितना ओपी था वो पांडा। ये आईडी से हाँ चलेगा, कोई भी आईडी से आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा नाम आ जाएगा इसमें, डोंट वरी मोंटी। स्क्रिबल पार्थ मेरे को एक गेम खेलना है, फटाफट फाइंड कर रहा हूँ। ओजी का मैच देखा मैं, फनाटिक के लिए बुरा, हाँ मेरे को भी फनाटिक के लिए बुरा लगा। दे प्लेड सो गुड अर्ली गेम, बट ओजी ने क्या बोलते हैं, जो होल्ड किया ना गेम और कम बैक किया ना, बहुत ओपी। यूरागी मस्त खेला बाद में, स्टार्टिंग में वो ठूक रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, वो डिलीट हो रहा था स्टार्टिंग में, तुम लोग देखो रहे हो तो। विदाउट ग्राफिक डोटा रन जरूर करेगा। अरे डोटा है ना सीपीयू इंटेंसिव गेम है, सीपीयू इंटेंसिव गेम है, तो तुम लोग सीपीयू थोड़ा भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा ना, तो ग्राफिक कार्ड की भी जरूरत नहीं है बोलूंगा तो। एक दो जीबी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स भी होगी तो हाँ हाँ वो तो है। पिंडा पांडा के साथ कब कर रहे हो स्ट्रीम? पिंडा पांडा के साथ पता नहीं वापस कब करेंगे, बात नहीं हुआ रिसेंटली पिंडा से, पता नहीं, बट करेंगे जरूर कभी ना कभी तो। वो तो मेरी फ्रेंड है, तो मैं उससे कभी भी बात कर सकता हूँ, बट ऐसा क्या बोलते हैं, उसको भी कुछ उसके फेवर में भी कुछ होना चाहिए ना अच्छा, तो जाके कुछ कंटेंट मतलब उसको भी मिले हम लोग को भी मिले, वैसा होना चाहिए। हम लोग के पास उतना नंबर्स नहीं है, वो ज़रा ज़्यादा ही आगे है। फनाटिक सिर्फ एनिग्मा के ब्लैक होल के डर से पुश नहीं कर रहे थे। हाँ ना यार, वो क्या मस्त था वो गेम, और नहीं कर सकते थे वो लोग। एनिग्मा ब्लैक होल आता है किधर से, वो नहीं, वो लोग के पास आंसर ही नहीं था। वो ट्रिएंड का अल्टी था, वो ट्रिएंड भी क्या मस्त खेल रहा था। ट्रिएंड ने रिफ्रेशर बनाया था और मैंगोज रख रहा था वो आदमी पूरा टाइम, क्योंकि उसके पास रिफ्रेश दबाने के बाद माना नहीं था, तो वो हमेशा 3 मैंगो रख रहा था। और जैसे एनिग्मा अल्टी कर रहा है, वो एक अल्टी क्रॉस कैंसिल कर रहा है, फिर एनिग्मा रिफ्रेश करके अल्टी कर रहा है, ये वापस कैंसिल कर रहा है रिफ्रेश करके। बहुत ओपी था। ट्विटर पे कुछ चल रहा है क्या मसाला? नोटेल ने कुछ डाला है क्या? भाई वो काइल ने देखा क्या, उसने स्टेटस डाला, डैन फनाटिक्स ऑलरेडी गॉट ओजी ऑन द रोप्स, दिस इज गोना बी अ क्विक वन, और ओजी जीत गया। माय गॉड। नोटेल किधर है भाई? सर्च करना पड़ेगा, 2 मिनट। ए क्या डाला है उसने नाम नोटेल ने? योहान योहान योहान।
अरे वो तो कल ही डाला है रे उसने, वो विंड रेंजर वाला फोटो बोल रहा है ना तू, वो तो कल ही डाला है, आज नहीं डाला है रे, पता है मुझे। की बाइंडिंग के बारे में बताओ थोड़ा, कैसे करते हैं, कौन से हीरोज पे करते हैं की बाइंडिंग? की बाइंडिंग मतलब ये बोल रहे तो यूजुअली की बाइंडिंग है ना इस पे करते हैं, जैसे कि इफ यू आर प्लेइंग समथिंग लाइक आर्क वार्डन और मीपो, उसके क्लोन्स को की बाइंडिंग कर सकता है, सिलाबेर के बेर को की बाइंडिंग कर सकता है, एन्चेंट्रेस चेन के क्रीप्स को की बाइंडिंग कर सकता है। कंट्रोल और वो बटन दबाना है, जो भी है कंट्रोल ग्रुप, की बाइंडिंग हो जाता है। Your turn to ban. 5 seconds remaining. मैं कुछ तो अभी कोई लोग ये भी यूज करते हैं, पता है, मिड वाले यूज करते हैं रून्स के लिए, पता है, कैमरा पोजीशन के लिए तुम लोग एक की डाल सकते हो और रून के इधर का, और फिर तुम लोग वो बटन दबाओगे तो सिर्फ डायरेक्ट रून देखेगा, समझा? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. भाई ये लोग का झगड़ा चल रहा है गेम चालू होने के पहले ही, पहले से ही चालू है गेम, चालू होने के पहले गेट लूज क्या चल रहा है भाई? माय गॉड गाइस, स्नाइपर मिड उठाया और अरे वो अभी तक रिलीज नहीं है इंडिया में, क्लाउड 2 वायरलेस, तुझे वायरलेस चाहिए ना, तो वायरलेस रिलीज नहीं है अभी तक इंडिया में, अवेलेबल नहीं है, मैं वही बोला, इफ यू वांट, कोई यूएस से आ रहा है तो उससे ले लेना। Hey Jamil Khan, 24 hours remaining for our giveaway bro, we're doing a giveaway, उसके लिए 24 hours remaining है। क्या चल रहा है भाई ये लोग का झगड़े, मतलब झगड़े चल रहे हैं। हाँ ट्री भी कर सकता है, बहुत सारे हीरोज कर सकते हैं, मतलब लड़ाई में डूबने वाला है भाई, क्या बोलूं, चालू होने के पहले ही ये हो गया है, पार्टी में नहीं है वो लोग, एक साथ फाइंड किया, ऐसा कुछ तो है। कभी कभी समझ में नहीं आता लोग ऐसे क्यों करते हैं। नेचर्स प्रॉफिट 30 लेवल का है भाई, 30 लेवल का नेचर्स प्रॉफिट है वो, 632 विन्स 500 लॉसेस, 800 रैंक। A leading light. Must take from Discord. 'Tis hardly a challenge. What's that you say? Shut the fuck up, bud. Yes. 30 seconds to battle. कुछ तो लगा क्या है वो उधर, कुछ तो लगा क्या है वो? I am honored. कौन है भाई ये? Allow me.
कोई तो चूतिया है गाइस, नो डाउट ये लोग झगड़ा कर रहे हैं. The battle begins. By your leave. इधर कुछ तो करके गए हो, चेक करूंगा मैं वार्ड. The honor is mine. सैड कुछ नहीं किया रे, ऐसे घूम के गए हो. क्या पकाया? Where to? Denied. I'm under attack. Oh. My quest continues. Where were we? My quest continues. By your leave. What's that you say? पक्का ले रहे रे. I am honored. The light shines. This way. I'll ride ahead. A milestone. Now, where was I? Allow me. What? Shine on. Ow. Oh. Tis hardly a challenge. The honor is mine. Over here. उसने भी पुल किया उधर. A leading light. Your bottom tower is under attack. Where to? Where were we? Kundalini! Where were we? Where to? What? I'm under attack. बच गया भाई वो. नहीं ठीक है. My quest continues. ये मर गया. Allow me. They who live by the wand shall die by my blade. Denied. The light shines upon me and within me. Yes. Kundalini! The honor is mine. By your leave. Tis hardly a challenge. Chakra. A leading light. Out of mana. Your The middle light tower is shines. under attack. Ow! Now, where was I? Over here. What's that you say? Oh! I'll ride ahead. बाद में वो खाना चाहिए उसको. A milestone. Oh! What's that you say?
Yes. A milestone. Finders. ये गेम में ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं भाई, बहुत घटिया चल रहा है. हाय सत्यजीत, गुड नाइट ब्रो पृथ्वीक, बाय बाय. I'll ride ahead. What? इसको 6 लेवल देना चाहिए मुझे. I am honored. Where were we? Where to? मर गए. Over here. तो मैं भी डेड हूँ. गलत हो गया यार. भाई ये बॉट्स ने बाईपास कैसे कर लिया रे. ओह फक. ये असली आया कि क्या है पता नहीं मुझे. The honor is mine. Plenty of water. Attack! Radiant's courier has been killed. A leading light. Over here. मर गया वो. Allow me. Dire's courier has been killed. 1-3 है मिड पे अपना हीरो. Be light on your hooves. Where to? शी. Regeneration. This will come in handy. Where were? अच्छा हुआ मैंने प्रोटेक्ट कर लिया रून स्टॉर्म का. स्टॉर्म का रून प्रोटेक्ट कर लिया तो अच्छा रहता है कभी भी, नहीं तो स्टॉर्म रून लेके तबाही मचाता है गेम में. Now where was I? By your leave. स्नाइपर जंगल कर रहा है रे. छी. Shine on. What's that you say? क्या चल रहा है इधर. I'm under attack. The honor is mine. दिख रहा था उधर कुछ तो मैं बोला क्या चल रहा है. उसका माना बन का ये दिख रहा था एनिमेशन फॉग में. कुछ नहीं, थोड़ा मैचेस देखे, एक गेम खेले, हारे. हाई प्रीरीत व्हाट्सअप भाई. ओपी था फनाटिक वर्सेस से, देखा ना, मजा आ गया. No nearer to my goal than before, but with greater resolve. I am honored. Yes. My quest continues. 'Tis hardly a challenge. I'll keep that. A leading light. Your top tower is under attack. What?
Radiant structures are fortified. What? Where to? Your middle tower is Over under here. attack. Cast a bright light here. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. भाई डाल दो डूम. डिनाई होने वाला है वो. ये गलत क्लिक हो गया. ओह फक. Your top tower is under attack. वो मिड पे मिस क्लिक हो गया यार. फक. कोई नहीं, वार्ड तो लग गया उनके इधर. Tower is under attack. A milestone. Your top tower is under attack. What's that you say? Over here. Can't help. The enemy's middle tower has fallen. Your top tower is under attack. By your Your leave. top tower has fallen. My quest continues. Lights out. Chakra. Your bottom tower is under attack. The light shines. Dire's structures are fortified. Tis hardly Your a bottom challenge. tower is under attack. Chakra. स्नाइपर क्या कर रहा है भाई? Bottom tower is under attack. What's that you say? Allow me. Where will brightly shine? Stand aside or be trampled. अरे एनपी बच गया रे. गेम इज हार्ड फ्रेंड्स. Your top tower is under attack. सिक्स 6.1 भाई. 6.1. अरे स्नाइपर तो कुछ कर भी नहीं रहे. 1-4 है गेम में वो. AFK किधर तो. Light channels through you. What? My quest continues. Yes. Oopsie, नहीं हुआ. Shine on. The enemy's bottom tower. निक्स था, हम लोग को स्काउट कर रहा था, पता नहीं था उधर. सैडली. I bring dark spirits.
punishment. Your top tower is under attack. By your leave. Can we go smoke? I have. Now, where was I? मुझे लग रहा है पाकिस्तानी है डूम. Over here. I am honored. Where to go? टाइम बाय कर लिया था मैंने. डूम करना चाहिए था, उधर दिख रहा था हम लोग को वो. पता नहीं स्टॉर्म स्पिरिट. A leading light. Allow me. By your leave. इसको भाई स्टॉर्म स्पिरिट ढूंढने जा रहे हो. No loves chakra. I am honored. अरे अरे अरे. ओके छूट मार दिया उसने. It's not time. Attack! Tis hardly a challenge. ये दोनों किधर मरे भाई? What? Now where was I? तुम लोग ने देखा क्या अभी? मैंने हिट मारा उस पे. हिट नहीं मारता ना, वो नहीं मरता था पता है. पहले हिट मारा इसलिए उसका थर्ड स्पेल, मैं थर्ड स्पेल टैंक कर लिया मेरे हिट से. Your bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. What's that you say? The honor is mine. The light shines. Almighty money. Chakra. A milestone. डूम सीडी है. डूम आया रहेगा. The light shines. डूम सीडी है तो स्मोक भी नहीं कर सकते सैडली. Allow Fake. me. डिवाइड करने. Your bottom tower is under attack. Now where was I? Your bottom tower has fallen. ए लैग. फोर्स कर लिया मैंने उसको. Your top tower is under attack. I'm not ready. Your top tower is There's under hardly attack. a lights out.
I'll ride at it. Your middle tower is under attack. हिंदी में बात कर रहे पाकिस्तानी लोग हैं. Walls are fortified. Your middle tower has been denied. Your top tower is under attack. A leading light. Your top tower has fallen. Be light on your hooves. Over here. A milestone. What's that you say? I am honored. पैक करूँगा थोड़ी देर बाद. Yes. छोड़ो, नहीं चाहिए उसको स्टैक्स. There's hardly a challenge. The honor is mine. Over here. Yes. I'm under attack. Allow me. I am honored. Where to? Dire structures are fortified. I'll ride at it. Where were we? What's that you say? Sweetness and light. भाई अपना गिव अवे है कल. The light shines. What? बीकेबी और मास्क ऑफ मैडनेस है रे आदमी के पास. पक्का ले. A milestone. बड़ूसा पे लोग आने वाले हैं. Shine on. Now, where was I? My quest continues. Where were we? A leading. Now, where was I? Down. Chakra. Where to? अरे रे रे रोश हो गया दोस्तों. जी. By your leave. Shine on. मास जी क्या सीन है? Over here. Allow me. I'll ride at you. Your middle tower is under attack. Yes. What's that you say? Go smoke, go smoke, go smoke, go smoke. What? We can. The light shines. कुछ नहीं कह रहे. उसने स्टन नहीं किया, कुछ नहीं किया अपने आदमी ने. The honor is mine. Radiant's courier has been killed. Tis hard. I am honored. Your top tower is under attack.
Strength up there. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Sad boys, game is hard. Where to? रैट होने वाले हैं थोड़ी देर में हम लोग अभी डाल दे रे डूम छी 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 My beard grows longer. Allow me. शॉट होती है मास. Now where was I? Finders keepers of the light. Can you give me this to break? Chakra. By your leave. A milestone. Over here. Beware the light. My quest continues. उसको फेक रहने चाहिए दे नहीं रहे लड़ू I'm under attack. The light pours out. Brightly shot. सैड मैंने गलत जगह पे लगा दिया What's that you say? ओ नो डुबा दिया Tis hardly a challenge. Shine on, Kundalini. यार माँ की खुद ही दे दे मुझे. गाली दे रहा है माय बैड एक्चुअली मैं डिफेंड कर सकता था एनपी ने तो रैट करके चला गया कोई तो एक रुकना चाहिए डूम वगैरह इधर जो उसको पकड़ के रख सके और मेरे बीके भी नहीं है क्या कर सकते हैं अभी The honor is mine. Kundalini. तो आपका रैक्स चल दिया My quest continues. A milestone. Kundalini. Where to? Killing them, guys. Go, go, go. Over here. Back. Back. Shine on. Hammer swags. Kundalini. By your leave. Kundalini. The honor is mine. Gimme. Now, where was I? एक्स बनाऊं कि क्या बनाऊं मैं वो सोच रहा हूँ I am honored. एक्स बना रहा हूँ मैं Where were we? Kundalini. Allow me. Brightly shine. What's that you say? Yes. Radiant structures are fortified. स्टॉर्म देख रहे हो क्या कैसे पकड़ने के लिए रुका है ओह माय गॉड The
यार ये बंदा मुझे फेक ग्रेनेड नहीं दे रहा मास मैं लिंकन कैसे तोड़ूं Next इधर ही I'll ride ahead. है ना अभी अवेलेबल है क्या बोल रहे हैं ये लैग हो रहा है रे Yes. Nick's buyback. What's that you say? What? Over here. Your middle tower has fallen. Allow me. Now, where was I? Where to? निक्स है उनके इधर A milestone. Shine on. ये खत्म हो गया अल्टी स्टॉर्म स्पिरिट मेरे पे ऐसे चिड़ा है ना वो बोल रहा हूँ बहुत चिड़ा है मेरे पे खेल कहीं तेरे पे जंप होगा तेरे पे जंप होगा तेरे पे जंप होगा ओ उधर वार्डेड है The honor is mine. Light shine. Kundalini. Over here. Kundalini. A leading light. Oh my gosh A milestone. एनपी देख रहे हो रैट Dire structures are fortified. ओ भाई ये तो मर गया मेरी क्या गलती है आदमी किधर खेल रहा है निकल जाना चाहिए था उसको पहले फेक ग्रेनेड से निकलता है लिंकेंस भाई कौन चैट में बोल रहा है निकलता है निकलता है A milestone. My quest continues. I'll ride at Yes. Your middle tower is under attack. I am Kundalini. Shine on. Oops. Light shines. A leading light. सेंट्रीज कम गिरे क्या हम लोग के पास ऐसे लग रहा है वार्ड नहीं लगा रहे अपना आदमी Where to? What's that you say? Tis hardly a challenge.
फार्म ही नहीं दे रहे रे, कैसे करो हेक्स फार्म? 200 गोल्ड चाहिए। Roshan has fallen to the ring. Immortality is mine. Over here. चलो हेक्स तो भी आ गया। The honor is mine. Scythe of Vice. इस पे जिसे स्टॉम पे ही है। What? गुड नाइट क्रेजी सीजी। निकलता है रे, अभी तो मेरे सामने निकाला उसने, क्या नहीं बोल रहे तू? Where were we? माना शील्ड ऑफ करके खेल रहा है ये। ओह माय गॉड, बहुत मस्ती है। मैं नहीं आ रहा उसके साथ, चल। Shine on. The light shines. Your bottom tower is under attack. Over here. Now, where was I? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is बेस के बाहर क्यों गया आदमी? बट पता नहीं। जी जी, ये हारना ही था तो पहले हार जाते रे। वेल प्लेड। Your bottom tower has fallen. Your bottom barracks are under शील्ड भी ऑफ था उसका पूरा टाइम, पता है? bottom barracks has fallen. शूट दिया। Your middle barracks are under जी जी गाइस। now has megaphons. Your middle tower is under मस्त गेम डुबा दिया। has fallen. शूट किया ऐसे। Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Radiant. पता नहीं कौन है ये आदमी, चुतिया है कोई तो श्योरली। जानता भी नहीं हूँ मैं इसको, कौन है? पता नहीं कौन है, कोई तो चुतिया है। एक्चुअली ये दूसरा है, वो दूसरा है। वो कौन है? वो कोच था क्या? ओ कोच है कि क्या है? दोनों नाम सेम है। फकिट, नहीं कोच नहीं है। आई गॉट वन फेस विद साइकिक बैंड। हाँ साइकिक बैंड नहीं करता है, ये करता है। इसमें क्या चल रहा है वैसे? These pop big time here from Game and Gladiators. I guess K1 did as well. As he is just backing Okay, ये गेम थोड़ा इवन चल रहा है। गेम 2 They still have it on CK, but no Phantasm on him, so I think Game and Gladiators, they're probably just gonna Bit of an take awkward this fight. minor victory, if you even want to call that, with the 2 BKBs that they popped, and just chill a little bit, control the area. And what about Maybe they're Roche? poking mid tower. Which team has the Roche advantage this time around? It's kind of close, I think, when Gyro has Side Gunner. Neither of them are super fast. Yeah.
If it was pre-nerf CK, I think I would pick the Dire just for the Chaos Strike bonus on Roche. I think it's kind of close. Overcharge with Gyro is always. And what about team fights in Roche? So to contestant one, you have the arena, you have Wukong's command on the other side. I would assume Beastcoast slightly. Yeah, I like Beastcoast in an arena fight simply because they have this better saves, right? They can telekinesis out, they have relocate, they have ghost ship. 2 बज गए दोस्तों, निकलना चाहिए। चैट है क्या कोई चैट में दोस्तों? It's time to sleep, my friends. Slow down. Nightmare setup. Boundless strike is there as well. Chaos bolt as well. Whisper gets off the arena though, but they've lost the gyro. And now Whisper running away. The rest of his team was trying to go for a gank in the top jungle to try to wrap around. But it ends up वो बूम वापस ये खेल रहा है। Hi Rift Luffy, what's up? वापस एम्बर खेल रहा है। Run away, still attached to the teammates. Dyrachyo and company. Whoops! एक इधर अटक गया। Awkwardly up here, still has his TP. Very well done by the Gladiators. I'm not sure how Celery reached that nightmare. It has to have been during a tether. Celery दूसरा हीरो खेल रहा है और Enchantress चेन नहीं खेल रहा है वो। That essentially just set that up. I think they have enough time, probably. No Phantasm once again though, so maybe it will be a little bit close. It is scanned out, but yeah. Wisp is not up for 20 seconds, which would be the relocate for the gyro in all likelihood, because they probably won't be able to get here in time, and yeah, it's going to be too late. So Gaming Gladiators with that 5K lead now and Aegis, they got, I believe, every Roche last game as well, so... I think so, yeah. They're separating themselves just a bit from Beastcoast. If Beastcoast knew for a fact that that Roche was happening, they might have been able to delay it long enough with 2 Torrents and a Ghost Ship, but... Well, they scanned it right at the beginning. Yeah, but it's not enough for them to move there when they have no information about the placement of enemy heroes, right? They don't have a good offensive ward to cover the area. They have the one on the enemy side of the hill, which gives a little bit of knowledge about where they are, but they don't see their own triangle high ground. So if you walk up there, you could just get caught and just blasted, and then the Roche is free, but you also lost 2 cores, right? So you're probably better off just not taking the risk and letting that go the way of Gaming Gladiators. Like you said, 5K lead. Starting to approach some new important items. Monkey King almost has the axe. You're all right. He was going to go for that. Chaos Knight Dagger in 100. Ember is building his own axe as well. And Celery on the way to have Vlad. So we'll get the ever so beloved Wraith Pact. Oh, yeah. It says a lot about Wraith Pact when you start buying it on Bane over Lens. That is very telling about how good this item is right now for these pro teams, because that has been the stable item for Bane. अरे कौन है पता नहीं, रिच होती है कोई तो कोई तो फैन है, बहुत चिढ़ा है मेरे पे, पता नहीं, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं उसको गेम में, कुछ भी नहीं बोला, आदमी बोले जा रहा है in their favor, at least from his perspective. लकीर मेरा मूड अच्छा है, नहीं तो मैं बहुत गाली देता था उसको, जान ना पहचान विंचो गाली दिए जा रहे हैं, पता नहीं कौन है। Tofu and Ace now getting control of the enemy jungle. मंकी पैक्स बनाते क्योंकि उसको स्टैट्स भी मिलता है पहले तो, प्लस ओवरऑल अच्छा भी रहता है बाद में डैमेज के साथ। Playing a little Monkey King action. चल पड़ते, ठीक से पड़ते। Monkey King axe किधर है? Spawns a monkey soldier near Monkey King at regular intervals. Soldiers do not spawn while invincible or on trees. Soldiers only attack buildings when Monkey King himself is nearby. Soldiers can now gain Jingu mastery charges independently. समझा? तो उनको Jingu charges भी मिलते हैं, प्लस वो डैमेज भी देते हैं, प्लस Monkey को अच्छे खासे स्टैट्स भी देता है। Wait, were they on the same tree? Yeah. He cut it and they both got stunned. वैसे रहता है। I don't think Dyrachyo. Okay, we're gonna look at a replay. Too, right? All right, we're gonna look at the replay. Oh, that's hilarious. If that's the case. We can investigate. I mean, was it too much weight for 2 heroes to be on the same tree, or maybe did he cut it with the Battle Fury? Either way, the tier 2 tower is going to be taken out uncontested. As we can see, the Agni Scepter online from Dyrachyo, and still 2 minutes with the Aegis. Oh, Boom might find more here. ये Boom खिलाड़ी आदमी है, but okay, one forced the BKB TP. And that's a relatively fresh one, right? That was the 8-second charge, so down to 7 he goes. And here we see the replay. Okay, so there's the first jump, and the second, the Battle Fury's
off cooldown. He does chop it, and they are both stunned. Oh, I thought he wasn't stunned because of the Aghanim Scepter. Oh, right. K1 getting slowed perpetually. We'll be able to get back to base, but it doesn't look like Gojira is going to be so lucky. So another kill for Gaming Gladiators, still with the Aegis advantage, as this lead is slowly growing in their favor. They're grouping up for a potential tier 2 push. Looks like Daedalus is going to be next for Doraccio. And this tier 2. चलो गाइस निकलता हूँ मैं एक्चुअली, बस हो गया आज के लिए. लाइट भी बहुत मुंह पे आ रहा है. It's time to sleep friends. मैं निकल रहा हूँ. That's it from me guys. कल के लिए याद रखना, कल 9:30-10 बजे हम लोग गिव अवे करेंगे. गिव अवे में एक लकी मेंबर को HyperX सोलो काश मिलने वाला है. बाकी मेंबर्स नॉन मेंबर सारे लोग हैं, उनके लिए भी एक कॉन्टेस्ट होने वाला है. तो कॉन्टेस्ट में हम लोग हीरो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. उसका सब कुछ देख के आओ, कॉस्मेटिक्स वगैरह देख के आओ, उससे रिलेटेड रहेगा. ये हिंट है, अच्छे से हिंट समझ के ले लेना. कोई भी हीरो का कुछ भी आ सकता है. तो मस्त गेम रहने वाला है. मुझे अभी लीक नहीं करना है. आई वांट टू कीप द व्हाट डू यू कॉल एक्साइटमेंट फॉर टुमारो. सो मेक श्योर यू गाइस ट्यून इन टुमारो और अच्छे से फन करेंगे हम लोग एक साथ देख के, आई मीन गिव अवे करके. दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, see you tomorrow. Careful with your pretty eyes and run with me. You're young, 'cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin, 'cause honestly let's hold our breath, this is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. Careful with your pretty eyes and run with me. You're young, 'cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin, 'cause honestly let's hold our breath, this is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight.